Sir, full spotlight. सर त्यांना कॉल करावा लागेल त्यांना घराला सर ते A very good morning to all of you. I, Dr. Amol Santosh Jadhav, firstly say we are very sorry for a technical issue. Sir, we will start up our program now. A very good morning to all of you. I, Dr. Amol Santosh Jadhav, extend you a very warm welcome on behalf of Sri Venkatesh Arts, Commerce and Science College, Devulgoraja, who has clubbed all of us for the online lecture series organized on the grand occasion of National Science Day 2021 by Department of Microbiology, Zoology, Botany, Physics, Mathematics, Chemistry, that is Faculty of Sciences of our college in collaboration with IQAC. Every year, the Faculty of Sciences of our college organize different and several activities like scientific Rangoli competition, blood group detections, plantations, poster presentations, debates, practical demos, etc. Sri Venkatesh College is being run by Sri Balaji Sansthan, Devulgoraja, District Buldana. It gives me immense pleasure that due to the continuous guidance and inspiration of our hereditary trustee and president, Honorable Raja Vijay Singh Jadhav Sahib, our college has made remarkable progress in the field of education as well as in the physical structures of the college. We now, due to the outbreak of COVID-19 pandemic, education sector is also affected. So, taking into consideration the need of situation, the Faculty of Sciences of our college has organized online lecture series on a grand occasion of National Science Day to share the knowledge among the intellectual participants. So, on this occasion, I welcome Dr. H.D. Chauhan sir as an inaugurator of the online lecture series. I request sir to please join this series. Thank you. Thank you, sir. I am very much delighted to welcome today's speakers for online lecture series as Dr. S.H. Kanekar sir, Principal Yashwantrao Chauhan College, Mangrulpir, Mr. Amol Nagrale sir, Assistant Professor, Department of Microbiology, Sri D.M. Burungale College, Shegaon, and Dr. Shivaji Ubarande sir, Assistant Professor, Department of Zoology, R.S. College, Pathri. Thank you, all of you. Now I would like to request Dr. H.D. Chauhan sir to please put his inaugural address. A very good morning to everybody who joined this online lecture series. Honorable President of Sri Venkatesh College, Devulgoraja, and the Hereditary Trustee of Sri Balaji Sansthan, Devulgoraja, Honorable Raja Vijay Singh Jadhav sir, the organizer of this lecture series, all heads of the department in our college, in the Faculty of Science, and also their departmental colleagues, and the people, the eminent persons who affirmed and who gave their permission to be a part of this lecture series, that is Dr. Khanerkar sir, Dr. Nagrade sir, Dr. Ubarhande sir, Dr. Chandak sir, Dr. Raulkar sir, Dr. Khodre sir, and Dr. Naikwar sir. First of all, I extend my sincere thanks to all these dignitaries on behalf of the Faculty of Science, on behalf of the heads of the Department of Science faculty, for helping
for extending their helping hands to organize this lecture series on the day of National Science Day 2021 on 1st March 2021. Initially, I extend my warm congratulations to all teachers of science faculty in our college for organizing such a nice event as usual, because they very often organize such kinds of activities under each departments throughout the year. It gives me immense pleasure as well as I feel proud to let you know that if you visit to our YouTube channel, you would come to know that several lectures and several activities have been undertaken during the last year since since the outbreak of corona and during the lockdown period. It means that the teachers in our college have always been in search of such kinds of activities so that they would always remain in the contact of the students by any means. When we came to know that it had completely become impossible to be in contact with the students physically in the classrooms, all departments in our college have planned their separate activities to be in touch with the students. And from that point of view, from that standpoint, the science faculty and the teachers working under this faculty have undertaken this appreciating project or admirable event, because they have thought to let the students know the importance of the science day along with other days which are regularly celebrated in the college. Online lecture series have been continuously going on in our college by the teacher itself, but under the NAC activity of faculty exchange and students exchange, all these heads of the department and their colleagues have thought to avail the additional knowledge or the knowledge by the eminent person outside our college to the students with respect to different kinds of topics. All of us believe that along with our teaching, it is also necessary for the students in our college to make them available various kinds of sources of knowledge in the form of eminent teachers in different colleges. And the eminent persons who have been invited for this lecture series are all stalwarts in their respective subjects. Definitely, they would give very, very important information, vital information to our students as well as teachers, because maximum our faculty, science faculty is young. They are also in search of such kinds of things that would definitely enhance their individual knowledge. They also try to pursue knowledge in the form of many things. I witness all those things. That's why it is my humble duty to congratulate to these faculty members and to thank to the eminent person who have accepted their invitation and who affirmed to be a part of this big event. Definitely, this event is going to give very valuable information to the students in our college, as well as I call it as a type of breeding, because when the students are at home, they are really helpless. Only online regular lectures may not be satisfying their needs. So, such kinds of additional activities, such kinds of extracurricular activities would definitely boost them or boost their interest in the faculties that they have chosen
in the subjects that they have chosen. It has been almost 1 year since the students have not visited the college or they have not attended the lectures personally or physically in the college. But yet, we as a member of Sri Venkatesh College or we as the teachers of Sri Venkatesh College tried not to fall short in our duty in catering the needs of the students with respect to their aspirations in the higher education. That is why every one of us, and particularly the science faculty teachers, each one of them have really tried to satisfy the needs of the students, intellectual needs of the students. And that's why initially I said that if you visit the YouTube channel of our college, you would come to know that how much activities have been undertaken and organized by different departments in our college, though it may be a national seminar, international webinar, national webinar, some lecture series, some workshops. So many activities have been undertaken, and today's activity is also one of them. So officially, I declare that this lecture series is inaugurated, and I, as an IQC coordinator of Sri Venkatesh College, extend my compliments, best compliments to all the faculty members, to all the eminent persons for this lecture series, which will go on for 3 days under different subjects. And all the eminent persons, as I already told, are expertise in their topics, are expertise in their subject, and so they would definitely enlighten us with their valuable speeches, valuable talks. I'm sure about it. So I stop here with this remark. I extend my deep sense of gratitude to all science faculty members for giving me an opportunity to be an inaugurator of this lecture series. I once again wish them a very all the best, and I stop here. Thank you. Thank you very much. Thank you very much for your inauguration of this online lecture series and for your remarkable and valuable guidance. Now, I request Mr. PB to introduce the today's speaker of online lecture series, Professor Amol Nagrale, sir. Good morning, all. Amol Nagraj, sir, presently working in assistant professor in Department of Microbiology, Sri D.M. Burungale Science Cards College, Shegaon. He is qualified CSIR NEET in 2011 and he did his master from the Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. Presently, he doing his PhD in the field of the medical microbiology, having eight 8 years experience in his credit, and he is actively engaged with the research in last 5 to 6 years, and with the high quality published work with the 7 national and international research journals in his repute. He his area in interest including in antimicrobial activities and the antibiotic resistance and biofilm producing bacteria, and he has delivered a many guest lecture in different colleges. With this, we are very opportunate to listen some eminent person in the field of the antimicrobial and antibiotic resistance. Thank you, sir. Now, we will turn towards the sessions in this online series. So, for this, firstly, we have Mr. Amol Nagrale, sir, of Department of Microbiology, as the first speaker. So, now I welcome you, sir, for your guest lecture. Thank you, Professor Amol, and thank you, Professor Pawar, sir, for giving the opportunity
to deliver my topic or presentation in your college. I know your college, it is one of the best college in the Vidarbha, Sri Venkatesh Arts, Commerce and Science College, Devurga Raja, with having the excellence of potential. I know personally, all the staff member belonging to the science, they are highly qualified and dedicated in their work. So I'm very grateful or feel honored to present my presentation in your college, in your lecture series. I once again thanks to organizer. Can I share my PPT? Amol sir, Professor Amol. Yes, sir, you can. Please make me host disable the participant screen sharing. Yes, sir. Presently, they showing the message. I'm not allowed to share the screen. Make me host so that I can share my PPT. Host Yes, disable sir. the participant screen sharing. Yes. It's all right. I am sharing my presentation. Just a minute. Is it visible? Professor Amol? Now is it visible? Yes, sir. It is clearly visible. Okay. So our today's topic, that is the antibiotics. Why I choose this topic for the today's lecture, because it is very important topic related to each and everyone. When I told to Dr. Pawar sir and Professor Ravi sir, they have told me about the different students belonging to the different subject. For example, mathematics, chemistry, and botany, zoology. All they are participate. And I thought that from the awareness point of view, this topic, it is very important. It is not a core microbiology topic. It is the topic which are important to each and everyone, because antibiotics nowadays, the use and there is a lots of misuse, and we may suffer from the misuse. So from the awareness point of view, from the warning point of view, we have to create the awareness about the antibiotic. So presently, from the content point of view, I will explain about what mean by the antibiotics, what the types of antibiotics, how it works, and later on I will discuss about there are very different myths and facts about the antibiotic, which are very important for all the students, dear students, and the people for their immunity point of view, for their health point of view. So as a definition, the antibiotic. Generally, antibiotic, it is the term which define the meaning or which correlate the meaning, any substance or the molecular substance produced by the one kind of microorganism and which inhibit the growth of another microorganisms or which kill the another microorganism. Means one microorganism produce it and another microorganism, it is inhibited by them. And such a substance which inhibit or the kill to the different other microorganism, that substance commonly called as antimicrobial agent. So there, and later term, there are again antimicrobial agent. The substance, they are natural, they may be synthetic or synthetic origin that kills or inhibit the growth of other microorganism. So one important point is that all the antibiotics are antimicrobials. So they inhibit the growth of other microorganisms. Anti means against, biotic means living form. So these are the some important definition of antibiotic.
as the discovery point of view, Alexander Fleming was the first scientist who had discovered the first antibiotic in 1929. So later on, it was isolated by Flore and Chains. So how the discovery it is occurred? The Fleming worked in his laboratory. What he observed that there is a petri plate in the laboratory, and there is this bacterial culture, for example, Staphylococci, it is present into the petri plate. Later on, the colonies of the mold, for example, penicillium, grow into the petri plate. After that, he accidentally observed that the growth of microorganism, for example, Staphylococci, which are present into the petri plate, it is inhibited, or the surrounding growth of the mold, penicillium, there is a clear zone. So what it indicates that? This clear zone indicate that there is no growth surrounding the colonies of the mold. Why there is no growth? Because the one kind of microorganism, for example, here, penicillium, secrete the chemical, and that chemical inhibit the growth of this Staphylococci. So he observed that, accidentally he observed that, and it brings the revolution into the world. That was the first evidence of producing antibiotic resistance, and that discovery makes the world healthy. So that is the first antibiotic, that is the penicillin, that was firstly recovered or discovered by Alexander Fleming. Now, why there is an association? Why one kind of microorganism produces the certain kind of chemical which inhibit the growth of another microorganism? Because we are living in the association. We are living in association means different types of associations are present. It may be a positive association, it may be a negative association. It is one kind of negative association. For the why they produces the chemical, as for the rule of nature, when we want to survive, we have to fight for the food, we have to fight for the shelter, and many in the nature, we may say that the living organism may fight for the partner also. So these are the important needs of the living animal. So for the survival point of view, they secrete the one kind of chemical and they inhibit the growth of other. And that is called as antibiosis. And this is the example of negative association. So now, depending upon the antibiotic, there are activity, depending upon the activity of antibiotic or effect of antibiotic, antibiotics broadly classified into two groups. For example, broad spectrum antibiotic and narrow spectrum antibiotic. Broad spectrum antibiotic means those antibiotics which inhibit the both kind of microorganism or many microorganism, gram positive bacteria as well as gram negative bacteria. So with a chemical or the antibiotic which inhibit or kill the different or many types of bacteria, maybe gram positive or maybe gram negative. That antibiotic commonly called as broad spectrum antibiotic. And in opposite to that, there is an narrow spectrum antibiotic. Narrow spectrum antibiotic kills or inhibit only one type of organism or only one type of bacteria. It may be a gram positive or it may be a gram negative. Now there are different antibiotics which are comes under the broad spectrum category or which comes under the narrow spectrum category. So commonly they work in their own manner. Now how they work? Now question arises, one chemical substance inhibit the growth of another microorganism. Now question arises, how they kill to the other? There is a particular mechanism
of killing to other or inhibiting the growth of other. So that mechanism lies into this diagrammatic representation. You can clearly see there is a bacterial cell, and there are various types of processes which are occur in a living organism. So here, some antibiotic, for example, penicillin, we have already discussed about it. It inhibits the cell wall synthesis of bacteria. So it restricts the cell wall formation. Now, other antibiotic, for example, polymyxin, which disturb the cell membrane functions. So that again, many antibiotic, for example, tetracycline, chloramphenicol, which inhibit the process of translation. In the protein synthesis, there is a transcription and translation process. So tetracycline, chloramphenicol, streptomycin, these antibiotics works in the process of translation. It blocks the process of translation. Later on, some antibiotics which blocks the metabolism of a bacteria, and some antibiotic which inhibit the process of transcription also, and some antibiotics, for example, conolins, which works in the process of restriction in the DNA replication. So they stop the DNA replication. So all these are the processes where the antibiotic exactly work, and through that they inhibit the growth or they kill to the bacteria. So this is the mechanism. Now, what kind of awareness we require today about the antimicrobial resistance? Nowadays, due to the misuse, or we can say due to the various factors responsible for the antimicrobial resistance. Now, what mean by the antimicrobial resistance? The bacteria become resistant to the antibiotic. Why there is an antibiotic resistance? Because of they develop this certain kind of mechanism to neutralize that antibiotic, or they produce certain kinds of enzyme to degrade that particular antibiotic. So there are various mechanisms through which that bacteria develop the mechanism to neutralize that particular antibiotic. There are so many reasons why there is an antimicrobial resistance, and why the bacteria nowadays becomes multi-drug resistance. Because one kind of bacteria they have developed or they evolved as per the what we want to say, that they develop the enzymatic destruction of the drug, the mechanism of destruction of the drug with the help of enzyme. Some bacteria develop the mechanism, they prevent the penetration of the drug. Some bacteria alter the antibiotic target site. So due to the alteration in the target site, that antibiotic never work. Means those antibiotic which work in the DNA replication, that cannot work into the protein synthesis. So as the site changes, as the process changes, target site or target process changes, then that antibiotics become the inactive. This is very important. And many bacteria develop the process for the ejection of the drug. So they efflux the drugs from their body. They excrete the drug from their body. So they disturb, and due to all these processes, they have developed the resistance. And this is the one of the we can say major threats in human life to antibiotic resistance. We will see how the antibiotic it is promote the resistance. How antibiotics promote the resistance. Means if a patient taking a course of antibiotic treatment does not complete it, this is one of the important factor. We will also see later on the prescribed dose. It is very important to take in a particular manner. Sometimes we forget to take it, or when we feel better, when we feel I am cured from that infection, dear students, we forget about our antibiotics and kept it. That is one of the best
we can say misuse of antibiotic. म्हणजे आपण बऱ्याचदा असं करतोय की आपल्याला बरं वाटते ना तर आपण ते टाकून देतो गोळ्या घेणं किंवा अँटीबायोटिक घेणं, किंवा आपण पास करतो ते फ्रॉम एकाला मला बरं वाटते का मग तेच आपण देन वी ट्रान्सफर इट टू अदर्स. सो दॅट इज द मिसयूज ऑफ अँटीबायोटिक. Then what's happened with this activity? The bacteria, they got a chance to build a resistance against that particular antibiotic. Bacteria got the chances. They got the chance to develop the resistance power against it. And due to that, they become the multi-drug resistance bacteria. Now, antibiotics also kills the innocent bystander bacteria which are non-pathogenic. Now, this is again a very important point. Due to the antibiotic, many of the helper bacteria, good bacteria we can say, they are associated with us, they are symbiotically associated with us, and they are killed by the antibiotics. So they develop the resistance again, they kill our normal flora also. So there are so many disadvantages. Now, let's talk about the important awareness. What are the myths about the antibiotic and what are the facts about the antibiotic? I think that was the core part related to the antibiotic. Initial part, it is related to the just definition and mechanism, all these things. Now, this is the important information which I want to share with you, dear students and dear colleagues. Nowadays, WHO warned us. Even today, 7 lakh people are died from these bacterial diseases. And up to the 20 and 50, up to the year of 2050, they warn us none of the antibiotics work in the 2050, up to 2050. Keep in mind. Why this is so? Because there are so many myths. So there are so many unawareness about the antibiotics. The fact it is different. Now we have to concentrate on what about the myths, what is the myths about the antibiotics and what are the facts about the antibiotics. Now one of the nowadays we are suffer from the pandemic and coronavirus. Everybody heard about the coronavirus. And even I'm not taking the example of illiterate people. I'm taking the example of intellectual people, those who are highly qualified. मी तुम्हाला एक माझाच अनुभव सांगतो की ह्या कोरोनाच्या काळात सगळ्यात जास्त जर मी काही ऑब्झर्व केलं असेल, even educated people, they buy the antibiotics against the corona. So many antibiotics they buy from the medical shop to treat the coronavirus. Dear student, dear friends, antibiotics never work against the corona. Keep in mind, antibiotics are effective in preventing and treating the only coronavirus. Because why? There are some opportunistic infection. They may occur in the coronavirus, but fact it is that no antibiotics do not work against the virus. Many of them are supposed that they work against the microorganism like viruses. But the fact is that they never or none of the antibiotics work against the viruses. Because antibiotics, it is made only for the bacteria. Now people think that this is the one kind of microorganism and it may be or killed by the antibiotic. But that is not the fact. The new coronavirus is a viruses. Therefore, antibiotics should not use as a means of prevention or treatment. So we never have to use the antibiotic against the coronavirus because it is an virus. However, if you are hospitalized but it is a very important point. If you are hospitalized
if you are suffer from the coronavirus or COVID-19, you may receive the antibiotic because of bacterial co-infection may possible. Because of the opportunistic infection, if your immune system it is lower, then there are some opportunistic infection caused by the bacteria. So for the treating them, the doctor may prescribe some kind of antibiotic for the bacterial infection, not for the viral infection. Keep in mind. So this is the one of the myths. The antibiotics work against the virus. In fact, it is that it is never work against the against the bacteria, against the viruses. So let's talk about another myth. One of the kind of myth is that antibiotic help into the reduce the length and severity of the cold or flu. Many of them are supposed that when we suffer from the cold or flu, generally we buy the antibiotics from the shop or from the medical store, and we oftenly think that it is useful to cure from the cold or flu. But the fact is that antibiotics, they do not have any effects on cold or flu, because there are many reasons for the cold and flu. Causative agent may be different. It is not a bacteria. It may not be bacteria. So generally cold and flu are different. Their causative agents are different. But when we go to shop and ask to the medical storekeeper, मला सर्दी झालेली आहे आणि तुम्ही काही गोळ्या देता का, तुम्ही गोळ्या द्या, असं आपण जनरली विद्यार्थी मित्रांनो बऱ्याचदा आपण असं बोलतो आणि मागतो सुद्धा. आणि तो सुद्धा तुम्हाला कितीतरी अँटीबायोटिक्स पेन किलर देऊन देतो. अँड असं द्यायला नाही पाहिजे. पण nowadays in our world, or we can say in our India, the people have lost their intellectual honesty. They have lost their intellectual honesty. त्याचा प्रामाणिकपणा जो आहे ना, त्याचा तो त्यांनी घालवलेला असते. तिथे लिहिलेलं असते फक्त काय लिहिलेलं असते, ग्राहक भगवान के समान होता है. पण तो कशाचा समान असते, ग्राहक हा त्यांच्यासाठी लुटण्याच्यासाठी बनलेला असते. ते तुम्हाला अक्षरशः you are the customer for them. You are not the friends of the storekeeper, medical storekeeper. You are the customer. आणि म्हणून तो नेहमी तुम्हाला काय करतो, तो त्याचा धंदा करतो. तो काय करतो, महागडे जे आवश्यक नसलेले अँटीबायोटिक सुद्धा तुम्हाला तो प्रिस्क्राईब करून किंवा तो देतो. आणि दिस इज द बिग वी कॅन से मिस्टेक्स of the intellectual people. They buy the antibiotics for the even cold or flu. This is the one of the myths, and the fact it is different. Another myths about the ear infection, sinus infection, bronchitis, and they need antibiotics. So whenever there is a ear infection, sinus infection, bronchitic infection, we suppose that we need the antibiotics. Generally, their causative agent it is different. The medication or symptoms, they are different. So they do not require the antibiotics. Sometimes the causative agent may be a different things. Suppose you are suffer from the ear pain. Pain may be from the different thing. Pain maybe arises from the different types of what we called as different irregular habitual changes may brings the pain in your ear. But we thought that it is the ear infection. But the fact it is different. So none of the antibiotics work against that myths. Later on, bacteria and infection are not to be feared anymore because we have good antibiotics. म्हणजे आपण असं बरेचदा म्हणतो की आपल्याला घाबरायचं काम नाहीये, कारण की आपल्याजवळ खूप चांगल्या प्रकारचे अँटीबायोटिक आहे. But it is not the fact. Nowadays, over use of antibiotics
decreasing the effectiveness. So one kind of antibiotic now, initially in 19th century or in 1921, when the penicillin was discovered, it is most effective drug in the world. But nowadays, there are so many bacteria, they have developed the antibiotic resistance power against the penicillin. So many pathogenic bacteria, they develop the resistance power against it. So there is no effect of the penicillin, although that antibiotic was very good at that time. But nowadays, it become effective. It lost their effectiveness. So this is the fact. But we suppose that we have the antibiotics and we do not bother about the bacterial infection. But that is not the fact. Many bacteria develop the resistance power to our current antibiotics also. Nowadays, there are so many antibiotics present into the market. But as the process of evolution, many of the bacteria develop the resistance power against that particular antibiotic. This is the fact. And the rate of new antibiotic production, it is quite slower than the infections rate, than the pathogenic rate. The rate of pathogenic bacteria, it is quite high. The rate of, in compared to the rate of antibiotic production, it is quite lower. म्हणजे आपण हे एक्झाम्पल घेऊ शकतो की अँटीबायोटिक प्रोडक्शन करणं किंवा अँटीबायोटिकचा सर्च करणं हे किती डिफिकल्ट आहे. आता नवेडेज वी आर सफर फ्रॉम द कोरोना डिसीज, कोविड डिसीज, which is caused by the coronavirus. The development of vaccines, how it is tedious job to develop the vaccines, to develop the antibiotics. It is not an easy job to develop the vaccines or antibiotic. So you can imagine if there is a condition, suppose there is a condition, and I think definitely it will come in the upcoming years. Many bacteria causes the many deaths regarding the bacterial infection, because you know the bacteria, they do not have the effect, or they do not inhibited by the antibiotic nowadays. Even they develop the different kinds of mechanism to destruct the antibiotics. So the myths, it is different, but the fact, dear student, it is different. Now, we overdose of antibiotics. Generally, we take the overdose of antibiotics, or we do not take the some kind of chemicals or some kind of antibiotics. Actually, they do not need to us, but doctor prescribe, or the medical storekeeper, they provide us. You know what is the drawback, or what is the main causes, or we can say drawbacks of that? When you feel depressed sometimes, when you suffer from the particular type of disease, and you cure them, you are cured from them, but still you are depressed, still you are feel anxious. Why you feel depressed? Why you feel anxious? This is the questions. Generally, when you suffer from the, for example, diarrhea, or from the malaria, or any type of disease, and later on, after some days, you are cured, you feel better after that. But you feel that you are depressed. You are gone to under depression. You know why? Because many antibiotics disturb or kill the normal flora of the gut. Now, in the gut, there are trillions of bacteria are present. They are responsible for the production of certain vitamins. For example, B and K. That vitamin, it is produced by the gut microbial flora.
They are responsible for the provide the immunity. They are very much responsible for the happiness, or they produce the certain kinds of chemical. For example, serotonin, or they changes the mood behavior. So that microbial flora, if it is disturbed, you are suffer from the stress. What happens in the stress, जेव्हा आपल्याला स्ट्रेस येतो ना, तेव्हा काय होतं, actually there is a release of some chemical called as hormone cortisol. आणि हा जो कॉर्टिसॉल आहे, हा जेव्हा आपल्या बॉडीमध्ये सिक्रेट होतो ना, तेव्हा आपण स्ट्रेस कंडिशन मध्ये स्पेशली जर तो आपल्या हार्ट मध्ये गेला तर इट इन्क्रीजेस द हार्ट रेट. इफ इट इज गोज इन टू द मसल, then it tighten the muscles. If it is goes into the abdomen, then it increases the metabolic activity, and we feel we lost the focus in the stress. Why this is happen? Because of the stress hormone was created. And sometimes if we disturb the microbial flora of the gut due to the use of antibiotics, which are very important for the production of serotonin. You know, there are feel-good hormone. One of the important hormone, that is the serotonin. For example, dopamine, epinephrine, and serotonin, dopamine, epinephrine, they are called as happy hormone or feel-good hormone. One of the important hormone which are related to the gut microbial flora, that is the serotonin. Trillions of bacteria, it is present into the gut. Their weight, it is almost about 2 kg. You can imagine the weight of your microbial gut flora, it is about 2 kg. If it is disturbed by the overuse of the antibiotic, it do not produce the serotonin. Keep in mind, 90% of your serotonin, it is produced into the gut, and it is directly linked with the brain. And sometimes another, if there is a this is the neurotransmitter, again this is a neurotransmitter, it is responsible for the anxiety and happiness. If the concentration of serotonin it is decreases, then you never feel happy, you feel depressed. So because of the microbial flora, if it is disturbed, if it is killed, they do not produce the serotonin, and you are feeling the depressed. So they changes your mood. Another important neurotransmitter, that is the GABA, gamma aminobutyric acid, which improve and regulate your mood. If it is not working properly, if it is not produced properly, because of the killing of your gut flora, which are symbiotically associated with you. Symbiotically means both the partner, we and microorganism, both the partner got benefited from each other. And if it is disturbed, if it is killed, if there is a dysbiosis means the destruction of the microbiota. There is a microbiome, yeah, terminology say. Microbiota means total population of the bacteria present into the particular organ. Microbiome, it is related to the bacterial population with the genome also. If it is disturbed, if there is a dysbiosis, then student, there is a release, there is a changes in the release of serotonin and gamma, and they are responsible for your mood and happiness. So if you want to happiness, what we want to do? Take care of your gut microbial flora. That is very important. Now, what I want to suggest you, save medicines for our children, proper use. In the future generation, if we want to save them, we need to follow the certain awareness point.
we need to follow the certain rules. If you do not require an antibiotic, don't take it. First and most important is that you have to finish the entire prescription. Again, I repeating this thing. You have to finish the entire prescription which are given by your doctor. Even if you are feeling better, then you have to finish your prescription. Second, do not share or keep unused antibiotic for another time. जनरली आपण बऱ्याचदा आपल्याला बरं वाटल्यानंतर अँटीबायोटिक आपल्या उरलेले असतात घरी. आपण काय करतो त्यावेळेस, आपण त्या बाजूच्यांना किंवा घरातल्यांना दुसऱ्यांना देऊन देतो. डू नॉट डू these things. They are responsible for this kind of activity, are responsible for the development of antimicrobial resistance, because antibiotics are specific to specific kind of infection. म्हणजे एका बॅक्टेरियल इन्फेक्शन साठी वेगळे अँटीबायोटिक असतात, दुसऱ्या जर तुम्हाला स्टमक इन्फेक्शन झालाय तर त्यासाठी वेगळे बॅक्टेरिया असतात, आणि जर तुम्हाला रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन झालं असेल तर त्यासाठी वेगळे अँटीबायोटिक प्रिस्क्राईब करतात. म्हणून अँटीबायोटिक आहे आणि ते सगळ्याच इन्फेक्शन साठी चालते असं जे काही मिथ्स आहे ना, ते मिथ्स काढून टाका. आणि यू आर द सायन्स स्टुडंट. What I accept from you, you share the knowledge. Why we are taking this lecture on the occasion of the Science Day? Because we want to create the awareness about the scientific aspects. We need to correlate our subject with the social. So, otherwise, there is no use of your knowledge. It is only applicable, or it is only gives importance when it got the importance when it is useful into the society. Now, what is the bottom line is that we are all responsible for our future. Do not think that if I misuse the antibiotic, then I will suffer from it. That is not the thing. You and your future generation also, you and your family member also, you and your colleagues also may suffer from that mistakes. Antibiotics are the global common good things. So they belonging to everyone. They are globally, they are important. Suppose if you are Indians are responsible for developing the resistance power, and that resistance power strain or resistance strength transfer from India to Japan, China, or other countries also. And they blame us. Nowadays, these things are happening. Under the developing countries, due to the misuse practices, many strains of antibiotic resistance are found here. And the developed countries are blamed to developing countries like India. So be sincere about the use of antibiotic. So what one person does affects the next one. It's a time we all became the antibiotic guardian. So dear friends, I accept, and dear teacher, I accept these things from you. I need to create the antibiotic. You must be work as an antibiotic guardians to retard the relatedness rise of bacterial resistance through correcting inappropriate use of these vital resources. So with this, on the occasion of Science Day, I'm very much thankful to the organizer of Sri Venkatesh College, Devudgaon Raja. So one important quotes, I will conclude my presentation. जर विज्ञानाच्या मदतीने फॉर द सायन्स डे ओकेजनला मी ज्याच्यावरती सगळ्यात जास्त आपण भर देत असतो, विज्ञानाच्या मदतीने माणूस पक्षाप्रमाणे आकाशात उडू शकतो. विज्ञानाच्या मदतीने माणूस माशाप्रमाणे पाण्यात पोहू शकतो. पण जर का विज्ञानाच्या मदतीने माणूस माणसावानी पृथ्वीवर चालू शकत नसेल किंवा संचार करू शकत नसेल तर ते विज्ञानाचं अपयश असेल.
And as we are the science student, as we are the belonging to the faculty of science, it is our prime duty to create the awareness related to all these things like antibiotics. Thank you once again. No, sir. नहीं लगेच आता स्टार्ट होतंय 5 If मिनिटांनी. there are any questions, you can ask. But वोट ऑफ थँक्स चालू आहे आता. 5 मिनिटात म्हणा सर. कोणाला any thank you sir thank you sir for your talk on antibiotics. You told all of us importance about antibiotics, its types, application, need, and facts of very antibiotics used daily, day to day life also. You talked about health point of use for the antibiotics and its research also. And nowadays we are carrying many much facts and myth, as you said that about antibiotics. You make that clear. So I'm very much thankful to you for such a wonderful lecture on this antibiotics. Thank you once again, sir. thank you, Professor Amol, and thank you, Nilesh sir, and Pawar sir, and Ravi sir. Once again, thank you. Thank you, sir. Now I request Mr. Ravindra Ganbas sir to deliver his vote of thanks for this session. Thank you, Amol sir. Good afternoon, one and all. It's my privileged duty to propose a vote of thanks to those who made this event of this session, of the inaugural session of this event. So first of all, it's my prime duty to thank our hereditary trustee, Honorable Raja Vijayasingh Jadhav, and President of Sri Venkatesh College, Deolgaon Raja, for their inspiration and coordinators' continuous support. I am again very thankful, or it's my prime duty to thank today's President, Head Department of English, Dr. H.D. Chauhan sir, for their guidance, motivation, and support to make this program successful. It's my prime duty to thank today's chief guest, Mr. Amol Nagrale sir, for giving their valuable time and showing their knowledge with the upcoming youth. Thank you very much, sir. I am in depth to thank coordinator of this session, Mr. P.B. Pawar sir, Head Department of Microbiology, Sri Venkatesh College, Deolgaon Raja. I am also thank to Dr. Amol Jadhav sir for his best anchoring, and I am again thank you to all student participants who make this program successful. And last but not least, I am very thankful to our technical team to make this program successful. Thank you. Thank you very much. Thank you, Ravi sir. Now for the next session, I hand over my chair to Dr. Gajanan Tamde sir. Please, sir. Thank you, Dr. Amol Jadhav. I, Dr. Gajanan Tamde, Assistant Professor, Botany Department. Today we are going to organize online lecture series on the occasion of National Science Day. I am very thankful to Honorable Vijay Singh Raja Jadhav sir, the Hereditary Trustee, Sri Balaji Sansthan, and President, Sri Venkatesh College, Deolgaon Raja, and IQC Coordinator, Professor Dr. Sudhir Chauhan sir, for grant permission to organize this online lecture series. Thank you so much
both of you, sir. On this occasion, we are having chief guest and speaker Dr. S. H. Kanerkar, sir, Principal Yeshwantrao Chavan College, Mangrul Pir. First of all, I warm welcome to Dr. S. H. Kanerkar, sir, in this National Science Day webinar series. On the half of Department of Botany, Sri Venkatesh Arts, Commerce and Science College, Deolgaon Raja, District, Buldana. I also welcome all participants for joining us with. Now I request to Mr. Nilesh Kakade sir, Head Department of Botany, Sri Venkatesh College, Deolgaon Raja, for the introduction of our today's speaker and chief guest, Dr. Kanerkar sir. Please, Dr. Kakade sir. Thank you, sir. Today, on the occasion of National Science Day, we have Dr. Suryakant Himmatrao Kanetkar. Presently, sir is a principal, Yeshwantrao Chavan, Arts, Commerce and Science College, Mangaluru Pir, District Washim. Sir was the member of Board of Studies in Botany, Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. Sir was the member of Subject Examination Committee Botany, Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati. Besides this, Sir has published 34 research papers in various national and international conferences. Sir is a research guide. Under his able guidance, one student has got his PhD and two students are pursuing their PhD. Sir has completed one research project sponsored by UGC New Delhi. Sir is coordinator of UGC funded career oriented program Mushroom Cultivation. Sir is a life member of Nagpur University Teachers Association. Sir is life member of Indian Science Congress Association. Sir is life member of Mycology Society India. Sir is executive member of Sant Gadge Baba Amravati University Botany Teachers Association. Sir had delivered guest lecture at various institutions. Today, we got an opportunity to listen such an eminent personality. On behalf of Sri Venkatesh Arts, Commerce and Science College, I welcome Dr. Kanetkar sir, and sir's topic of discussion is Depression, a Present Scenario. Please, sir, guide us. Thank you. Am I audible, Kakade sir? Yes, you are audible. Okay. एकदम क्लियर है. तुम्ही एक वाज Thank you, Kakade sir. I kindly humble request to our speaker, Dr. Kanerkar sir, to start his valuable talk. Thank you very much. Good afternoon, one and all. First of all, I am thankful to principal and organizing committee of this event for giving me wonderful opportunity to share my views on special day to Cancer Day. The Faculty of Science and Internal Quality Assurance IQAC of Sri Venkatesh Arts, Commerce and Science organized the lecture series on National Science Day of April. Friends, apart from the subject botany, before that I was thinking about what topic should be important for the students. Most of the time I have delivered near about 15 to 20 guest lectures at different institutes or different colleges. But all the lectures they are related with particularly the subject that is botany. For first year, for second year, final year, on methodology, they are taxonomy, cytology, genetics, molecular biology,
and even biotechnology and genetic engineering. But friends, just I think what we do for the students, what is important for the students. Okay, no doubt, it's a national science day, and everybody they try to stick to the science. But what is about the psychology of the students? What is about the other things of the student? These are not directly related with the the subject, but it is related with the students. It is indirectly related with the students. So many challenges are the today's student they facing so many challenges. I'm not here point out the problem. क्योंकि जब प्रॉब्लम की बात आती है, when we focus on the problem, तो प्रॉब्लम जो है और अभी और बढ़ जाती है. और जब कोई पॉसिबिलिटी होती है खाली और आप पॉसिबिलिटी की तरफ फोकस करेंगे तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी. रिपीट अगेन, मैं हिंदी में बात करना चाहूंगा क्योंकि मेरा टाइटल जो है टॉपिक का वो है डिप्रेशन और प्रेजेंट सिनेरियो व्हिच इज रिलेटेड विद द स्टूडेंट्स. डिप्रेशन और प्रेजेंट सिनेरियो. तो मैं बात कर रहा था कि जो एक प्रॉब्लम होता है वो प्रॉब्लम का आपको मजा आए. जब हम प्रॉब्लम बोलते हैं ना, वो सारी बातें अपने मन में आ जाता है और प्रॉब्लम जब बोला जाता है तब खुद उसके सॉल्यूशन के पीछे जाना. सो व्हेन वी फोकस ऑन द प्रॉब्लम, क्या होता है कि वो प्रॉब्लम है वो बढ़ जाता है. और जब आप कोई पॉसिबिलिटी की तरफ ध्यान देंगे या पॉसिबिलिटी की तरफ फोकस करेंगे तो वो आपके लिए अपॉर्चुनिटी बन जाएगी. जो टॉपिक है आज का वो है डिप्रेशन. जब हम आजकल के स्टूडेंट की बात करते हैं, कॉलेज स्टूडेंट की बात करते हैं, तो ये जो बच्चे अपने वो सारे चैलेंजेस फेस करते हैं. Right from their entry in the college up to their exit. जहाँ से वो कॉलेज में एडमिशन लेते हैं वहां से लेके अपने कॉलेज में वो यूजी के लिए 3 साल रहेंगे या पीजी के लिए 4 साल 5 साल रहेंगे. तो apart from the subject, apart from the chemistry, botany, zoology, physics, microbiology, mathematics, English, apart from that, our students they face a lot of challenges. So which are these particular challenges? And due to such challenges, the students they are suffering from certain ... like the depression, anxiety, या कोई डिसऑर्डर या और सारी बात. WHO आपको पता है विश्व स्वास्थ्य संगठन की ताजा अनुमान के मुताबिक दुनिया भर में करीब 30 करोड़ से अधिक लोग ये डिप्रेशन के शिकार हैं. बोले तो डिप्रेशन जैसे डिप्रेशन ग्रस्त है. संयुक्त राष्ट्र ने विश्व स्वास्थ्य दिवस से पहले इन अनुमानों को जारी करते हुए कहा कि ये आंकड़े सभी देशों की चेतावनी है. दुनिया में करीब जो मैं बात कर रहा था 30 करोड़ से ऊपर लोगों का जो डिप्रेशन से पीड़ित है. ये बात अपने जो प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी इसका जिक्र किया है. उन्होंने कहा है कि डिप्रेशन से मुक्ति पाने के लिए या डिप्रेशन से तब मुक्ति मिल सकती है और कब
इसका पहला मंत्र है कि इससे दबने की बजाय डिप्रेशन में या डिप्रेशन दबाने से उसको व्यक्त करें। And that is too much important. 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस, आने वाले जो 7 अप्रैल है वो विश्व स्वास्थ्य दिवस है। संयुक्त राष्ट्र ने ये डिसाइड किया है कि 2030 तक सबको स्वास्थ्य का लक्ष्य तय किया है। और इस बार संयुक्त राष्ट्र ने 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस पर डिप्रेशन के विषय पर फोकस किया है। आप सभी को पता है, सभी लोग बिजी है, किसी के पास में टाइम नहीं है, अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी है, वो सारे चैलेंजेस अपन फेस कर रहे हैं। और आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हर चौथा आदमी डिप्रेशन का शिकार हो जाता है या हो रहा है। डिप्रेशन कई बार थोड़े से समय के लिए रहता है, कभी यही डिप्रेशन एक भयानक से रूप लेता है। कोई इंसान डिप्रेशन से संबंधित बीमारी से पीड़ित होता है तो कई बार ऐसा भी होता है कि जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी होती है और जो अपने कामकाज होते हैं ये बीच में बाधा डालते हैं, या कभी कभी अपने कुछ फैमिली जो प्रॉब्लम है यही अपने दुखों का कारण बन जाता है। में आप सभी को पता है, एवरीबॉडी देखो, एवरीबॉडी नॉट मी पीपल, अपन ने अपने अलावा भी जितने भी सारे लोग हैं हर एक के जीवन में, चाहे वो कॉलेज स्टूडेंट भी ना हो, हर एक के जीवन में उतार चढ़ाव आते रहता है। कभी सफलता मिलने पर बहुत खुशी मिलती है तो कभी असफल होने पर अपन इंसान दुखी हो जाती है। कई बार लोग छोटे मोटे जो दुख को भी डिप्रेशन का नाम दे देते हैं, जो छोटी बातें होती है उससे भी डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। डिप्रेशन अब उसको डिप्रेशन नाम देते हैं, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि डिप्रेशन जो है वो नॉर्मल सैडनेस से बहुत अलग होता है। अभी क्या होता है डिप्रेशन, उसके बारे में अपन बात करेंगे, उसके बारे में देखिए। तांबड़े सर, तांबड़े सर, हेलो हेलो सर, am I clearly audible? Little bit noise is there, sir. Yes, yes. You are not clearly audible. Oh, few seconds. तांबड़े सर क्लियर है? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अभी का डिप्रेशन क्या होता है? डिप्रेशन की स्थिति तब होती है जब हम जीवन के हर पहलू पर नकारात्मक नेगेटिव एटीट्यूड रूप से सोचने लगते हैं। जब यह स्थिति एक चरम सीमा पर यानी एक क्लाइमैक्स तक पहुंच जाती है तो इंसान को अपनी जिंदगी बेकार लगने लगती है और वो धीरे धीरे क्या वो इंसान डिप्रेशन की स्थिति में पहुंच जाता है। चिंता और तनाव के कारण शरीर में कई हार्मोन्स का लेवल बढ़ता है। सबको पता है कि हार्मोन में इम्बैलेंस होता है। देयर इज सिक्रेशन ऑफ द लोअर अमाउंट ऑफ न्यूरोन, various type of hormones, and which causes the disorders. तो जो हार्मोन्स की जो लेवल है वो बढ़ जाती है, जिनमें एड्रेनलिन,
और चिंता की स्थिति से डिप्रेशन ये बदल जाता है। आपको पता होगा आपने की जो चिंता है ना वो चिंता समान होती है। चिंता ये चिंता समान होती है। और कभी कभी अपन बेफालतू चिंता करते हैं, फोकट चिंता करते हैं, कोई गल नहीं होती उसकी, कोई बात नहीं होती है बुद्धि चिंता करने की। लेकिन उसके पहले ही अपन वो जो बोझ है वो अपन दिमाग में ले लेते हैं, उसके बारे में अपन सोचने लगते हैं, जिसकी वजह से आजकल कोई लोग या स्टूडेंट जो है वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। डिप्रेशन एक ऐसी मानसिक स्थिति है या स्थायी मानसिक क्रिया है जिसमें व्यक्ति को उदासी, अकेलापन, निराशा, कम आत्मसम्मान और आत्म प्रताड़ना महसूस होती है। इससे संकेत मानव समिति संबंधी मदद, समाज से कटना और ऐसी स्थितियां जिसमें कि अत्यधिक यानी ज्यादा या कम भूख लगना और ज्यादा या कम नींद आना ऐसा भी नजर आता है। कुछ डिप्रेशन के जो हम बोलेंगे सिम्टम के जैसा, अभी एक्चुअली डिप्रेशन के सिम्टम के हो रहा है। जो बात डिस्कस करना है मैं आगे थोड़ा सा डिस्कस करूंगा। अभी छोटी अपन जो मेन पॉइंट्स है उसमें से जा रहे हैं। अभी डिप्रेशन है इसके एक्चुअल क्या सिम्टम्स होते हैं। मेरा नियम होता है 15 सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन, इसको साइकोलॉजिकल सिम्टम बोलते हैं। जैसे निरंतर चिंता करना, स्वास्थ्य के विषय में चिंता करना, नकारात्मक विचार नेगेटिव, बहुत गलत बात है नेगेटिव, कुछ लोग तो नेगेटिव सोचते रहते हैं। भ्रामक विचार जैसे माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, काम में मन न लगना, स्वभाव चिड़चिड़ा होना, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आना, भ्रम करना, मनामध्ये भ्रम तयार होतो एखाद्या गोष्टीचा, विनाकारण मन स्थिति में बदलाव आना, पागल जैसे बर्ताव करना, अकेलापन या अकेला रहना, बुरे सपने आना, खुश न रहना, बार बार परेशानी में या अपसेट रहना, स्ट्रेस लेना, कोई भी बात का तनाव एकदम, कम बोलना, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि बहुत ही रिजर्व हो जाते हैं, ये डिप्रेशन का सिम्टम होता है। और डर लगना जैसे फोबिया के जैसे। तो उसके लिए कुछ मैं सिंपल टिप बोलूंगा, सिंपल टिप्स। कई बच्चे या स्टूडेंट या कॉलेज स्टूडेंट या अदर भी डिप्रेशन की शिकार न हो, तो उसके लिए सिंपल टिप्स आपको दूंगा। सिंपल टिप बोलूंगा, खुश कैसे रहेगा आपकी, बाकी बातें चलती तो पहले बोला हर एक आदमी जो है उसको कुछ ना कुछ चैलेंजेस होते ही होती है, कुछ ना कुछ होते ही, छोटे नहीं या बड़े नहीं, अपने अपने हिसाब, अपने अपने काम के हिसाब, अपने अपने प्रोफेशन के वगैरह। लेकिन इससे या इसको हावी कैसे ना इसी के ऊपर फोकस करना। कभी कभी क्या होता है कि your way of expression is looking positive, but internal thoughts are already negative. कुछ लोगों का ऐसा होता है कि ऊपर से वो सोचते हैं कि भाई अपन पॉजिटिव लग रहे, पॉजिटिव बोल रहे, वो ऊपर से होता है, ऊपर से होता है। चला वो बोल मन तो बनाने पड़े, वर बोल दे, वर दाखिल दे, वर डिस्प्ले कर दे। पर एक्चुअली उसके अंदर बॉडी के अंदर जो इंटरनल थॉट्स होते हैं ना वो एकदम बिल्कुल
पूरे भरे हुए होते, ऐसे लगता है कब ज्वालामुखी कब बाहर बाहर आएगा होगा, उसके इंटरनल थॉट्स रहेगा वो ऑलरेडी नेगेटिव होते हैं, वो बोलता है पॉजिटिव, वो शो के जैसा, लेकिन अकेले अपने वो बात थी अपने को खुद को या आपको बहुत ज्यादा करते हैं। मैंने आपको पहले बोला है कि चिंता ये चिता समान होती है, ज्यादा चिंता करना अरे वो चिंता होती है, क्योंकि हर एक का कुछ ना कुछ होता ही है, कुछ ना कुछ चलते ही रहता है। मानो जन्मा नजर आ रहा तो मरेपर्यंत मृत्यू होईपर्यंत या शरीरात में आत्मा जाएपर्यंत तब तक ये बातें चलती रहती है। तो कोई भी बात आपके ऊपर हावी नहीं होने होगा, कोई भी बात आपके ऊपर हावी नहीं होने को होगा। जैसे मैंने आपको बोला है कि चिंता ये चिता समान होती है। अभी अपन फिजिकल सिम्टम देखेंगे, पहले देखिए साइकोलॉजिकल सिम्टम्स डिप्रेशन के, अभी फिजिकल सिम्टम देखेंगे, सर दर्द होना, दिल का कांपना, खाना निगलने में मुश्किल होना, जैसे अपना जो ट्रैक होता है ना इंटेक करने का ट्रैक, उसमें आपको निगलने में तकलीफ होती है, उल्टी का होना, बार बार बाथरूम जाना, जो श्वास है ब्रीदिंग है थोड़ा सा लो हो जाना, छोटा हो जाना, चक्कर आना, मांसपेशियों में दर्द, अरे मस्कुलर पेन, दिल की धड़कन तेज होना, हार्ट बीट मतलब बढ़ जाना, 72 शरीर का कांपना, शरीर जैसे थरथर करना, पसीना आना, ज्यादा पसीना, कुछ लोगों को पसीना आते रहता है लेकिन ज्यादा पसीना आना, ब्लड प्रेशर में फ्लक्चुएशन होना, कम ज्यादा होना और थकावट आना। ये जो है शारीरिक लक्षण। अभी ऐसी जो बातें हैं इसको और कम करना जरूरी है। इसका ऊपर अपने तो हाल होना बहुत जरूरी होता है। वो जो चिंता है, जो चैलेंज है, वो अपने ऊपर हाल नहीं होती। जब अपने ऊपर हाल हो जाएगा तो अपन मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा, अपन एंजाइटी में चले जाएंगे, अपन डिप्रेशन में चले जाएंगे। तो बी पॉजिटिव, पॉजिटिव सोचना ये बहुत बड़ी बात है। पॉजिटिव सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको 2 लाइन बोलता हूँ, ध्यान से सुनना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिसन केयरफुली। प्रसन्न वो लोग होते हैं, प्रसन्न वो लोग होते हैं जो खुद का वैल्यूएशन खुद करते हैं। प्रसन्न वो लोग होते हैं जो खुद का वैल्यूएशन करते हैं या खुद करते हैं, और परेशान वो लोग होते हैं जो दूसरे का वैल्यूएशन करते हैं। परेशानी ये अपनी दूसरे की वजह से करती है, अपन दूसरे के बारे में ज्यादा सोचते हैं, इसके बारे में सोचना, उसके बारे में सोचना, फ्रेंड्स के बारे में सोचना, ये ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, वो ऐसा क्यों, वो ऐसा, ये तो दिन भर सोचते रहते। देखो जो भी प्रॉब्लम, जो भी चैलेंजेस जो भी आते हैं उसके लिए जिम्मेदार अपन खुद होते हैं। वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। मेरे जो चैलेंजेस होंगे उसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ, मैं जिम्मेदार हूँ, जितने नहीं होंगे वो दूसरे के बारे में क्या होगा, इसने ऐसा किया होगा, उसने ऐसा किया होगा, हर की बात होती। मैं भी कॉलेज जाता हूँ तो कॉलेज में मैं पॉजिटिवली गया, मैंने पॉजिटिव एटीट्यूड रखा, तो मेरे कॉलेज में एटमॉस्फेयर पॉजिटिव रहेगा। मैं हर बार की शर्त नहीं, हर बार
इतने सारे टीचिंग स्टाफ होता है, दो सारे नॉन टीचिंग होते हैं, अटेंडर होते हैं, लेबोरेटरी अटेंडर। उसके अलावा आजकल ये ऑनलाइन में स्टूडेंट या पैंडेमिक की वजह से स्टूडेंट नहीं है, तो मैं हर एक के बारे में सोचूंगा तो मैं कितना परेशान हो जाऊंगा। तो वही बात मैं पॉजिटिवली क्यों करूं? बहुत सारी बातें होती रहती है दिन भर से, राइट फ्रॉम मॉर्निंग अप टू द नाइट व्हेन वी गो टू स्लीप, यानी सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात, रात से लेकर सुबह, ये तो पूरा दिन भर दिमाग अपना चलते रहता है। तो अगर दिमाग में कितनी सारी परेशानी लेंगे, कितना सारा भूसा बनेंगे, भूसा भरेंगे, ये सब हमारा अनवांटेड। और आखिरी अपनी जो अपना जो दिमाग है ना, तो मैं कुछ ऐसा काम करूंगा पॉजिटिवली ही लेना पड़ेगा, पॉजिटिव अप्रोच से जाना पड़ेगा। कोई टीचिंग स्टाफ का, नॉन टीचिंग स्टाफ का, या कोई स्टूडेंट का, किसी का भी, या किसी से भी मुझे कुछ बात है या कुछ काम करना है, तो वो बात आधी नहीं होगी, तो अपन कंपेयर कर करके दूसरे का वैल्यूएशन कर करके परेशान हो जाते हैं। इसलिए मैंने दो लाइन बोली कि प्रसन्न वो लोग होते हैं जो खुद का वैल्यूएशन करते हैं, और परेशान वो लोग होते हैं कि जो दूसरे का वैल्यूएशन। देखो आपकी सोच कैसी है वो इम्पोर्टेंट। सोच बदलो, आप खुद बदल जाओगे। सोच बदलो, आपकी खुद की सोच, खुद के विचार बदल जाएंगे। सोच बदलो, आपकी पूरी बॉडी आपको रिस्पॉन्ड देगी। सोच बदलो, आपका पूरा मौसम बदल जाए। तो सोच को बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। Nobody can go back. Listen, nobody can go back and start a new beginning. कोई भी पीछे जाके नई शुरुआत नहीं कर सकता, लेकिन दिखता तो तय है ना। Anyone can start today and make a new one. कोई भी शुरुआत आज कर सकते हैं, आज से शुरू कर सकते हैं, और जो आपके लिए नई लाइफ बन जाएगी। तो आप खुद को सवारो। देखो मैं आपको एक एग्जाम्पल बोलता हूँ। छोटे छोटे बातें होते हैं जिसके डिप्रेशन में चले जाते हैं, कुछ साइकोलॉजिकल टेंशन की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं। तो मैं आपको छोटा सा एक एग्जाम्पल दूं। To wash many clothes is too easy to common people. To wash many clothes is too easy to common people. Common people के लिए दो सारे कपड़े, 10 कपड़े धोना दो सारी बात है। But on the other hand, all thousands of rupees, लेकिन वही कॉमन मैन के लिए, साधारण आदमी के लिए हजारों रुपए कमाना वो डिफिकल्ट है। बट ऑन द अदर हैंड, आप दूसरी बात देखेंगे, ऑन द अदर हैंड, इफ वी थिंक अबाउट मुकेश अंबानी, जब अपन मुकेश अंबानी जी की बात करेंगे, तो अर्न 1 crore rupees इज टू इजी टू मुकेश अंबानी। उनको 1 करोड़ कमाना सारी बात, चुटकी सर से गोष्ट है। But to wash only 2 cloths is too difficult. ये बात बराबर ध्यान में रखिए। लेकिन किसको क्या सूट कर रहा है? एक कॉमन मैन के लिए वो कॉमन एक बात कर रहे हैं, साधारण बात कर रहे हैं, तो 10-12 कपड़े उसको होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, फटाफट धो लेगा। लेकिन यानी उसकी दिमाग, उसका शरीर, उसकी बुद्धि दे, उसको हजारों रुपए कमाना, उसकी बुद्धि नहीं है, उतनी स्किल नहीं है उसके पास, सोर्सेस नहीं है। लेकिन अपन मुकेश अंबानी की बात, मुकेश अंबानी की अंबानी जी की बात करेंगे,
उनके लिए 1 करोड़ रुपए कमाना बहुत सारी बात है, वो बड़ा आपका एम्पायर है उनका, लेकिन उन्हीं के लिए 2 कपड़े धोना कितनी डिफिकल्ट था, बिकॉज उनका वो एक्सपीरियंस नहीं है। So you have to live according to your experience. आगे के पार्ट की तरफ जाएंगे तो अपन डिप्रेशन जो है वो पुरुषों में अलग होता है, उसके कुछ कारण अलग होते हैं। जो लेडीज होती है कुछ अलग कारण होते हैं, अपन पहले ब्रेन में देखेंगे कि डिप्रेस पुरुषों में ऐसी महिलाओं की अपेक्षा कम निराशा और सेल्फ अर्केट देखी जाती है। इसकी जगह वो थके होना, चिड़चिड़ा होना, नींद ना आना सब होने मिलती है। सर शायद आवाज में दिक्कत है, अभी आ रही क्या? यस सर, यस सर। अभी क्लियर है? कुछ तो भी गड़बड़ है ना, हो रही है, रेंज में है क्या है? ओके, मे बी देयर इज अ नेटवर्क इशू सर। यस सर, यस सर, अभी क्लियर है? हाँ क्लियर है सर। ओके, थैंक यू सर, सॉरी फॉर इंटरप्शन, सॉरी फ्रेंड्स। अभी अपन कुछ और सिंपल टिप देखेंगे, हाउ टू ओवरकम ऑन द ड्रास्टिक सिचुएशन। चेंज योर फिक्स एक्टिविटीज और डिसाइडेड एक्टिविटीज। आपकी जो फिक्स्ड एक्टिविटीज होती है यही करना है, या डिसाइडेड एक्टिविटीज होती है जे आपण ठरवली ती चेंज करा। मैंने बोला था आपको कि आपकी सोच बदलो, आपका पूरा मूड बदल जाएगा। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सोच बदलना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, आप पॉजिटिव थिंकिंग से रहेंगे तो आपका भलाई होगा। अपन पॉजिटिव सोचेंगे तो डेफिनेटली भलाई होगा, अच्छा ही होगा। पॉजिटिव थिंकिंग आपका कम से कम निगेटिव तो नहीं करेगा। जब आप पॉजिटिव सोचेंगे तो वो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव थिंकिंग आपका कम से कम निगेटिव तो नहीं करेगा। लेकिन जब आप निगेटिव थिंकिंग या आपका निगेटिव थिंकिंग आपका पॉजिटिव नहीं लेकिन निगेटिव जरूर करेगा, यानी पॉजिटिव सोचने में हर्ज क्या है? बी पॉजिटिव, सकारात्मक रहो। माणसाने आयुष्यात जीवनामध्ये सकारात्मक असलं पाहिजे। मी सर्व विद्यार्थ्यांना उद्देशून सांगतो, भला ही अपना डिप्रेशन या अपन सब पार्ट लेके कवर कर रहे हैं, लेकिन मैं खास तौर से बच्चों को बोलता हूँ, जो स्टूडेंट यहाँ पे ज्वाइन हो गए हैं, ये जूम मीट में या यूट्यूब पे ज्वाइन है, मैं सबको मेरी तरफ से रिक्वेस्ट करता, बी पॉजिटिव। आप जितना पॉजिटिव रहेंगे उतना आप खुश रहोगे। एंजॉय द कॉलेज, आप कॉलेज एंजॉय करो, अच्छे से एंजॉय करो। अभी तो लॉकडाउन है, या अभी आपको पता है मार्च महीने से लेकर अभी तक अपना ऑनलाइन ही चल रहा, ऑफलाइन बंद है। हम लोग भी आपको बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, क्योंकि बच्चों के सिवा कॉलेज नहीं होता, स्कूल नहीं होती है बच्चों के सिवा। दैट इज अ की पार्ट। बच्चे कॉलेज का की पार्ट है। हम कॉलेज में जा रहे आ रहे, हमारी ड्यूटी कर रहे वो, लेकिन मजा नहीं आ रही वो। क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस हम लेते हैं तो दैट इज अ
एक जैसे वन वे इंटरेक्शन होता है, जब अपन फिजिकली आमने सामने होते हैं ना तब मजा आती है। तो ये तो चल रहा, कब तक चलेगा? जो भी होगा आगे अच्छा होगा, क्योंकि आप पॉजिटिव सोचो कि जल्दी से जल्दी जो भी आजकल का एटमॉस्फेयर है, अभी का जो वातावरण है, वो डेफिनेटली खत्म होगा। तो मैं ही आपको बोल रहा था, क्यों आप पॉजिटिव नहीं सोचते? पॉजिटिव सोचो यार, और बोलो ना खुद को ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल। बोलने में क्या है, पैसे थोड़ी जाते। पॉजिटिव सोचो ना। आपका निगेटिव तो बिल्कुल नहीं होगा, लेकिन जब आप निगेटिव सोचेंगे तो आपका कभी पॉजिटिव नहीं होगा, लेकिन निगेटिव जरूर होगा। सो योर थिंकिंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। योर थिंकिंग, वे ऑफ थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो ये जो डिप्रेशन है उसके कुछ कारण भी है। अरे डिप्रेशन काय की वजह से आता है? डिप्रेशन ये कॉम्प्लिकेटेड यानी जटिल बीमारी है। ये सिर्फ मस्तिष्क में नहीं, मस्तिष्क में नहीं, ये केमिकल इम्बैलेंस की वजह से भी होती है। इसको दूसरे शब्दों में कहे तो ये आपकी लाइफस्टाइल, आपकी रिलेशन, आपकी समस्याएं, जैसे आप समस्या को कैसे हैंडल करते हो, इन बातों की वजह से भी हो सकता है, या आप डिप्रेशन में जा सकते हैं। पर कुछ फैक्टर्स जो डिप्रेशन होने के चांसेस बढ़ा देते हैं, वो है अकेलापन, सोशल सपोर्ट की कमी, बिकॉज वी आर द सोशल एनिमल्स, वित्तीय समस्याएं यानी कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ आपके तनावपूर्ण अनुभव, जैसे कुछ लोगों के पेंडेमिक या कोरोना की वजह से भी कुछ लोग सफर हुए। जो मैरिड लोग हैं उनके कुछ रिलेशन में प्रॉब्लम, एकाधिका कोई खराब बचपन गया या उसका एक्सपीरियंस बचपने में बहुत खराब है ऐसे, या कुछ जो हैबिट्स होते हैं अपने गलत हैबिट्स होते हैं, गलत हैबिट्स की वजह से उसके तरफ नहीं जाएंगे, या इवन एम्प्लॉयमेंट की बात आती है, बेरोजगारी, और वर्क प्रेशर, कामाचा ताणतणाव। जसं विद्यार्थ्यांवर सेमेस्टर पॅटर्न मध्ये आपको पता है कि कंटिन्यूअसली प्रेशर आ रहा, एक सेमेस्टर के बाद में दूसरा, दूसरे के बाद में तीसरा, ऐसा कंटिन्यूअसली हो रहा। और बच्चे जो है इसमें बहुत ज्यादा सफर हो रहे। जो भी है वो यूनिवर्सिटी का पैटर्न है, आपको फेस, हमारे को फॉलो करना पड़ेगा और आपको भी फॉलो करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। लेकिन इसमें बच्चे जो है बिजी हो जाते हैं या बिजी रहते हैं, उसकी वजह से उनके ऊपर बहुत सारा प्रेशर आता है, बहुत सारा टेंशन आता है। देखो हर एक के ऊपर टेंशन होता है, हर एक के ऊपर प्रेशर होता है, लेकिन उसको रेक्टिफाई कैसे करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। टैकल कैसे करना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको एक एग्जांपल बताता बढ़िया। आप सभी ने अरुणिमा सिन्हा, ये मैडम का नाम सुना होगा, अरुणिमा सिन्हा। ये अरुणिमा सिन्हा एक माउंटियर यानी ट्रैकर है, ट्रैकर। शी बिलोंग्स टू सुल्तानपुर यूपी, और ये वॉलीबॉल चैंपियन भी है, अरुणिमा सिन्हा। मैं इनकी एक आपको छोटी सी एक स्टोरी बताता। देखो चिंता किसको नहीं होती है, प्रेशर किसके ऊपर नहीं होता है, टेंशन किसके ऊपर नहीं होता है, लेकिन उसको हैंडल जो करेगा ना वही बाजीगर होता है, वही सिकंदर होता है। जो इसको रेक्टिफाई करता है या इसको टैकल करता है। हर एक के जीवन में सुख के साथ में दुख आता है, लेकिन जो आदमी दुख के साथ कुश्ती खेलता है ना, संघर्ष करता है ना,
वही लोग जो है ना वो बाजीगर होते हैं, वही लोग वो सिकंदर होते हैं. माणसाने आयुष्यातल्या वाईट दिवसामध्येच खरा अनुभव घेतला पाहिजे, संघर्षामध्येच अनुभव घेतला पाहिजे, तेव्हा आपण मेंटली स्ट्रॉंग बनत असतो. सुखात तर सगळेच जगतात, पण जेव्हा दुःख येतं ना, तर दुःख सुद्धा माणसाने आनंदाने झेललं पाहिजे. दुःखामध्ये माणसाने डळमळू नये. दोन गोष्टी चालतच राहतात, पण दुःखामध्ये संघर्ष करायला शिकलं पाहिजे, अडचणीमध्ये संघर्ष करायला शिकलं पाहिजे, तेव्हा खरी मजा येते, तेव्हा आपल्याला काही वाटणार नाही. ऐसी बातों के, ऐसे डिसऑर्डर के अपन शिकार नहीं बनेंगे, वो बात अपने ऊपर हावी नहीं होंगी. ये एंजाइटी, ये डिप्रेशन, ये ऐसे डिसऑर्डर बिल्कुल नहीं. मैं आपको मेरी तरफ से बोलता हूं, मैं आपको 100% गारंटी देता हूं. बी पॉजिटिव, बी काम, बी कूल, हर बात एंजॉय करो, हर बात पॉजिटिवली लो, कोई गल नहीं. मैं आपको बात कर रहा था मिसेस अरुणिमा सिन्हा की. एक एग्जाम्पल है, जिन्होंने एक एग्जाम्पल सेट किया. ये जो अरुणिमा सिन्हा है, जब ट्रेन में कुछ जा रही थी बरेली के तरफ, बरेली यूपी में आपको पता है, तो उनको उनके गले में एक चेन थी सोने की, शायद ऐसी स्टोरी है, आपने सुनी होंगी. और जो 4-5 चेन स्नॅचर है, चेन स्नॅचर, त्याला आपण साखळी चोर बनतो, वह ऐसे लोग ट्रेन में घुस गए थे. और क्या हो गया कि ये जो चेन स्नैचर है, वो उनको पकड़ के चेन जो है खींच रहे थे. गले की छोटी चेन की बात, ऐसा टैकल करने की कोशिश की. और ये करते करते क्या हो गया, ये 4-5 लोगों ने इनको, मैडम को, अरुणिमा सिन्हा मैडम को ट्रेन से बाहर फेंक दी. बाजू के वो रेलवे पटरी पे जो पैरेलल दूसरी चलती है पटरी, उसके ऊपर जाके गिरी और बहुत सारा मार लग गया. और क्या हो गया, एक्सीडेंटली वो पटरी पे ही मैडम गिरी थी, अरुणिमा सिन्हा मैडम, और जो पैरेलल रेलवे ट्रैक है उसके ऊपर से दूसरी ट्रेन चली गई और उनका पैर कट गया. एक ऐसी स्टोरी है. देन एडमिटेड टू हॉस्पिटल, बाद में रिकवर भी किया उन्होंने, रिकवर हुआ, लेकिन पैर जो है वो चले गया. शी लॉस्ट हर, you know, the important body, that is the leg. और बाद में आपको पता होगा, आप सभी को पता होगा कि त्यांनी एक शिखर सर केलं और वहां पे इंडिया का झंडा गाड़ दिया. और मैडम को शी वॉज ऑनर्ड बाय पद्मश्री, उनको पद्मश्री मिला. देखो कैसी स्टोरी है. पहले तो वो वॉलीबॉल चैंपियन थी, ये इंसिडेंट में पैर गवा दिया, लेकिन उन्होंने खुद से ठान लिया था, भला ही वो फिजिकली कोई चैलेंज था वो पैर का, लेकिन किसी का ना मानी, किसी की ना मानी, इवन डॉक्टर की भी. डॉक्टर ने बोला था आप ऐसा मत करो, लेकिन उन्होंने ट्रेनिंग ली और उन्होंने अपने इंडिया का झंडा वो शिखर पे गाड़ दिया, वो माउंटेन पे गाड़ दिया और उनको पद्मश्री मिला. और उन्होंने बोला था, मैंने इंटरव्यू सुना उनका, मैडम ने बोला था कि जहां चाह है वहां, देयर इज अ वे, देयर इज अ विल. इच्छा तिथे मार्ग. देयर इज अ विल, देयर इज अ वे. सॉरी टू से, देयर इज अ विल, देयर इज अ वे. इच्छा तिथे
जहां चाह है वहां राह है। आप सोचो, आप जितना अच्छा सोचेंगे, बढ़िया सोचेंगे, पॉजिटिवली सोचेंगे, आपका अच्छा ही होगा। कम से कम बुरा तो नहीं होगा, डेफिनेटली अच्छा होगा। और आप यही हिसाब से चलेंगे तो कोई भी डिसऑर्डर, कोई भी बात, ये डिप्रेशन जैसी बात कहीं भी आपके आजू बाजू में, हाँ जीवन में चढ़ाव उतार चलते ही रहते हैं, ये फ्लक्चुएशन होते ही रहता है हर एक के जीवन में। मेरा खुद का भी जीवन एक संघर्षपूर्ण जीवन है। मैं ये कॉमन कॉमन फैमिली से आया, मैं यहाँ तक ये पोस्ट तक आने के लिए मुझे भी कितने सारे पापड़ बेलने लगे। लेकिन आप जीवन को एक चैलेंज जैसे स्वीकारो, उसको एक्सेप्ट करो। दुख है, उसको एक्सेप्ट करो। आप दुख आपके ऊपर हावी नहीं होने को ना, आप दुख के ऊपर हावी हो जाओ, तब मजा आएगी। और मैडम ने बोला था कि सबसे बड़ा जो मोटिवेटर है ना, आप खुद होते हैं। ध्यान में लेना ये बात, अंडरलाइन करो इसको, कि सबसे बड़ा जो मोटिवेटर है ना, वो आप खुद होते हैं। और खुद ही खुद के मोटिवेटर बनो। आत्मचिंतन करा, 5 मिनिटाकरता थोडासा बसून घरी विचार करा, चिंतन करा, 10 मिनिट का मेडिटेशन करो, मजा आता। You have to give only 10 minutes for any type of music, and you have to concentrate for 10 minutes. You are getting wonderful result. मनाला कुठेतरी स्थिर करा, म्हणजे तुमचे उरलेले 23 तास 50 मिनिट 100% माझ्याकडून सांगतो चांगले जाईल। 10 मिनिट सकाळी स्वतःला द्या, स्वतःचं मन शांत करायला, खुद का मन प्रसन्न करने के लिए, कॉन्सेंट्रेट करने के लिए 10-15 मिनट दे दो, बाकी 24 घंटे आपके अच्छे जाएंगे। डेफिनेटली ये मैं मेरी तरफ से बोलता। जीवन में दुख सुख, चढ़ाव उतार, कम ज्यादा, ये चलते रहता है। जैसे पैसा, ये कम ज्यादा होते रहता, दिन कम ज्यादा होते रहते। कोई भी बात आपके मन के जैसे नहीं होंगी, सोचना भी नहीं, डोंट थिंक। मैं सोचूंगा कि भाई मैं प्रिंसिपल हूं, मैं फिलहाल तो ऑफिसेटिंग प्रिंसिपल हूं, सॉरी टू से ऑफिसेटिंग हूं, तो ये गलत है। मैं ऐसा सोचूं तो कि हर बात कॉलेज में मेरे हिसाब से हो, ये गलत है मेरी सोच। मुझे तकलीफ होगी क्योंकि मैं वो वे से देखूंगा, मेरा थिंकिंग वैसा रहेगा, मेरा थिंकिंग वैसा ही रहेगा, मेरी सोच वैसी हो जाएगी। अपेक्षित नहीं ना सर, इतने बड़े स्टाफ में, इतने बड़े कैंपस में कोई भी बात मेरे हिसाब से हो, दैट इज नॉट पॉसिबल, एंड आई नो वेरी वेल। सो व्हाई आई एम एक्सपेक्टिंग फ्रॉम एवरीवन? ये गलत है। मैं ऐसे सोच रहा तो, और हर बात मेरे जैसे नहीं होगी, मैं जो सोचता वैसे नहीं होगी, तो कम ज्यादा होते रहता। डोंट बी इरिटेट। मैं जितना खुद को डिस्टर्ब करूंगा, खुद को जितना इरिटेट करूंगा, उतनी तकलीफ आगे वाले को नहीं, मुझे होगी। 5 बजे मेरा दिमाग खराब हो जाएगा, 5 बजे तक। सो डोंट नेगेटिव, डोंट थिंक लाइक दिस, बी पॉजिटिव, बी काम, बी स्टेबल, तब मजा आएगी काम करने में, मुझे काम करने में और दूसरे से काम करवा लेने में मजा आएगी। सो योर वे ऑफ थिंकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, योर वे ऑफ एक्सप्रेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो अपन छोटी छोटी बातों से ये डिप्रेशन का, एंजाइटी का अपन शिकार हो जाते हैं। अब ये डिप्रेशन जो है, इसके ट्रीटमेंट क्या है? तो जो भी छोटी छोटी बात, छोटी छोटी इसमें बोलता मैं आपको, कि जो भी मामला आपसे होता है, जो भी बात आपसे होती है ना, गलत बात, उससे आप उसको नजरअंदाज कर दो, यानी उससे आप ध्यान हटा लो, थोड़ा सा बाजू हो जाओ, जिससे व्यक्ति को शांति मिलती है। अब ये डिप्रेशन की
अलग अलग वजह होती है। अगर आप डिप्रेशन का समाधान निकालना चाहते हैं तो डिप्रेशन की वजह को जानने की कोशिश करें। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, व्हाई दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इज देयर, व्हाई दिस टाइप ऑफ डिसऑर्डर इन माय माइंड, इन माय बॉडी। उसकी आप वजह देखो, रीजन देखो, और इसके बाद इसे कहीं लिख सकते हो आप, उसको पॉइंट आउट कर सकते। फिर सोचिए कि इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है, आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं क्या, और अगर पॉसिबल हो तो उस पर जल्द से जल्द अमल करना शुरू करें। यानी उसका सॉल्यूशन निकालो और उसको अमल करो। फ्यूचर की टेंशन ना ले, मतलब प्रेजेंट में जियो। प्रेजेंट में जीना बहुत जरूरी है। जो पास्ट होता है ना वो अपने लिए सीख होता है। पास्ट, मेरा जो पास्ट है ना वो मेरे लिए सीख दे के चले गया, या वो सीख होती आहे। माणसाने भूतकाळापासून शिकलं पाहिजे, वर्तमानाचा आनंद आणि अनुभव घेतला पाहिजे, आणि भविष्याची अवाजवी चिंता करायला नको। जो आपका पास्ट टेंस है वो आपके लिए सीख होती है, जैसी ठोकर लागली पुढे पाहून चला। जो वर्तमान होता है ना, आज का प्रेजेंट, आई एम एंजॉइंग माय लेक्चर। मैं ये नहीं सोच रहा मुझे कॉलेज जाना है, बहुत सारे काम है, मेरी 2:30 बजे नया की मीटिंग है, नया का रूसा की। मैं ये सोच नहीं रहा, मेरे दिमाग में ये नहीं है। मैं अभी फोकस किया मैंने ये लेक्चर के ऊपर कि नाउ आई एम डिलीवरिंग द लेक्चर और ऑनलाइन लेक्चर, एंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट दे आर फोकस ऑन मी। वो मेरे तरफ ध्यान दे रहे, मेरे तरफ देख रहे, मुझे सुन रहे। सो डोंट ब्रदर और डोंट वरी अबाउट द अदर। मैं वो नहीं सोचू, वो ठीक नहीं है। यानी फ्यूचर का टेंशन ज्यादा ना ले, फ्यूचर का टेंशन ले लेकिन टेंशन करके ना ले, सोचे फ्री, टेंशन ना ले। आप आपका डिप्रेशन कहीं जो भी आपको आपकी हॉबीज है उससे आप रेक्टिफाई कर सकते। हॉबीज, किसी को म्यूजिक का शौक होता है, किसी को किताबें पढ़ने का, गाने सुनने का, बजाने का, वगैरह वगैरह। और दूसरी बात, डिप्रेशन का इलाज, जो आपकी भावना होती है ना, भावना, इमोशन जो होती है ना, उसको दबाओ मत। इमोशन को आप शेयर करो, आपके जो कलीग्स होते हैं उनसे शेयर करो, बहुत जरूरी होता है। नहीं तो डिप्रेशन के जल्दी शिकार बन जाते हैं। म्हणजे भावनेला थोडासा मार्ग मोकळा करा, कुठेतरी व्यक्त करा, त्या फार गरजेच्या असतात। त्या मोकळ्या झाल्या की कुठेतरी डोक्यावरचं ओझ, जो दिमाग के ऊपर बोझ रहता है ना, वो कम हो जाता है। कम से कम बोझ तो कम होता है बोलने से। सो यू हैव टू शेयर योर इमोशंस टू योर कलीग्स, योर फ्रेंड्स, नेबरर्स, योर रिलेटिव्स, एटसेट्रा। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि रोजमर्रा की जिंदगी में ये तो चलते ही रहता है, छोटी छोटी बातें होती ही रहती है। किस किस बात का आप टेंशन लेंगे, किस किस बात की आप चिंता करेंगे। आप हर बात का टेंशन लेंगे, हर बात की चिंता करेंगे तो ये जीना मुश्किल हो जाएगा। आप सभी को पता है, आपने एक मूवी देखी है, ये जिंदगी मिले ना दोबारा। ये बार बार जिंदगी नहीं मिलती अपने को, एक ही बार जीवन, ये एक ही बार होता है, कोई पुनर्जन्म नहीं। मी तो नहीं ऐकलं भाऊ, हम साइंस के, पता नहीं है मुझे, कोई पुनर्जन्म नहीं है। पिक्चर में दिखाते हैं पुनर्जन्म वगैरह वगैरह, वो होगा कुछ, वो अपन मूवी के जैसे देखते हैं उसको अपन। मेरे करण अर्जुन आएंगे, नहीं आएंगे, ये रियल लाइफ में नहीं आते बार बार, एक ही बार जन्म होता है। तो एंजॉय करके जियो, ये चलते रहता है। तो एक बहुत बढ़िया गाना है मोहम्मद अजीज जी का, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना है। मैं आगे आपको और 2 एग्जाम्पल बताऊंगा। दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है। अपन तो बिल्कुल फिट है, फिट एंड फाइन है, बाय प्रोफेशन भी अच्छे है,
आप सभी स्टूडेंट जो है, आप भी अच्छे हैं, आपके पास में बहुत सारी फैसिलिटीज है, सो यू हैव टू एंजॉय ऑल दिस फैसिलिटी। व्हाई यू आर वरीड? आप चिंता क्यों करते हैं? आप ज्यादा सोचते क्यों है? प्रेजेंट में जियो, फ्यूचर के बारे में सोचो, लेकिन फ्यूचर का ज्यादा टेंशन मत लो। सोचो, सोचना जरूरी है, लेकिन हिसाब से, कि वो सोचना आपका कहीं चिंता का कारण न हो, एंजाइटी न हो, डिप्रेशन न हो। तो मैं आपको बोल रहा था कि जो भावना होती है ना, आपके अंदर जो भी होता है उसको आप व्यक्त करो, उसको आप बाहर फेंको, यानी बोलो। एक तो बात है नशीली चीजों से दूर रहना, ये सबको पता है। डिप्रेशन ये आजकल फिजिकल वर्कआउट और ये जो योगा प्राणायाम होते हैं उससे ही वो कम हो जाता है। अगर आप टेंशन और डिप्रेशन से मुक्त होना चाहते हैं तो रोज प्राणायाम करें। योगा प्राणायाम बहुत जरूरी है, आपके हिसाब से करो, 10 मिनट 15 मिनट। मैंने आपको बोला था मेडिटेशन करो, बहुत जरूरी होता है। यू हैव टू कॉन्सेंट्रेट फॉर 10 to 15 मिनट्स फॉर योर रेस्ट ऑफ 24 आवर्स। 24 घंटे के लिए आपके 24 घंटे अच्छे जाने को होना, तो उसके लिए 10-15 मिनट आप खुद को टाइम लो, खुद को एक जगह पे जरा स्टिक करो, तब जाके मजा आएगी। तब ये बातें आपके आजू बाजू में नहीं आ सकती। इस योग से टेंशन, स्ट्रेस और डिप्रेशन कम होता है और बुद्धि तेज हो जाती है। आपको पता है आजकल टीवी चैनलों पे, बहुत सारे चैनलों पे ये बताते हैं योग प्राणायाम का अभ्यास होता है, टाटा स्काई पे है और डिशेस पे है, आपको पता है। तो आप 10-15 मिनट, 20 मिनट, 25 मिनट खुद के लिए दे सकते हैं यार। बाकी तो अपने अपना ही टाइम है ना। 1 घंटा खुद के लिए दे दिया तो 23 घंटे आपके है ना। तो ऐसा जरूर करें और हंसने की कला सीखें। देखो एक बात है, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उनको हंसाना बहुत मुश्किल काम होता है, हंसाना बहुत। और कुछ लोग ऐसे होते हैं दिल खुलास होते हैं, हंस देते हैं। आप ही देखो आपके फ्रेंड सर्कल में या मेरे फ्रेंड सर्कल में अलग अलग टाइप के लोग होते हैं। कुछ लोग है ना बिल्कुल आराम से हंसते हैं, इजीली हंसी निकल जाती है उनकी। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं हंसी नहीं आती उनकी। अपने को भी लगता है यार हंसता क्यों नहीं है, प्रॉब्लम क्या है। हाँ देखो है, वो कंपनी फॉल्ट होता है, वो बोलता है यार मुझे हंसी नहीं आती। लेकिन दोस्तों हंसना बहुत जरूरी है, जहाँ पे बॉडी रिलैक्स होती है, बॉडी का व्यायाम होता है, मजा आती है, चेहरे का एक्सप्रेशन बदल जाता है, अच्छे फीलिंग्स आते हैं। सो द लाफ्टर इज टू मच इंपॉर्टेंट। नहीं तो आजकल क्या होते हैं लोग लाफ्टर क्लब लगा देते और सुबह सुबह वहां पे जाके हंसते हैं जोर जोर से। वो आर्टिफिशियल लाफ्टर है, पैसे देके हंसना। अरे यार कैसे, बगैर पैसे में हंसो। किसी ने कोई जोक किया हंस दो ना, क्लास में हंस लिया तो भी चलता, कोई प्रॉब्लम नहीं। हम कलीग लोग हैं, यानी हम जो कलीग होते हैं, हम भी आपस में जब बात करते हैं तो हंस देने का, कोई गल नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई इसके पैसे नहीं लगते। हंस दो, आप रिलैक्स हो जाएंगे। जहां पे आपके जो मसल्स है ना उसको आराम मिलता है, स्ट्रेस निकल जाता है और फील गुड फैक्टर बनता है। फील गुड फैक्टर जो है बॉडी का वो बढ़ जाता है, फील गुड फैक्टर। और एंडोर्फिन हार्मोन्स की मात्रा बढ़ती है। एंडोर्फिन, जूलॉजी वाले बच्चे उनको पता होगा, पढ़ा होगा आपने फिजियोलॉजी में। और इसमें अपने को रिलैक्स महसूस होता है, अच्छा लगता है। अकेलेपन से छुटकारा पाए। अकेलापन एक डिप्रेशन का कारण, बहुत सारे बच्चे कभी कभी अकेलेपन में चले जाते हैं, अकेला ही रहते, अकेला ही खेलते, ऐसे बच्चे डिप्रेशन में चले जाते। और अगर आपके परिवार में कोई इंसान डिप्रेशन से पीड़ित है तो जितना हो सके उसके साथ समय बिताए, ज्यादा से ज्यादा बात करें, उसको ग्रुप में रखें। कभी कभी ज्यादा डिप्रेशन की वजह से सुसाइड भी कर लेते हैं, या सुसाइड की जो बातें है ना, विचार है ना, वो दिमाग में चलने शुरू हो जाते हैं। सो बी अलर्ट।
इमोशनल स्किल्स डेवलप करें। यानी बहुत लोग जो है ना वो तनाव को सही तरह से डील नहीं कर सकते, वो भावुक हो जाते हैं एकदम. काही लोक बघा पटकन डोळ्याला पाणी येते, असून येऊन जाते. एखादी मायाची साडी पिक्चर पाहिला की डोळ्यातून पाणी. मायाची साड़ी पुराना पिक्चर था. कुछ कुछ लोगों को ऐसे देखे बराबर बिल्कुल आंखों में आंसू आ जाते, वो लोग इमोशनल होते हैं. तो ये जो ऐसे इमोशन है ना, इसके ऊपर आप थोड़ा सा इमोशन को हावी मत होने दो बॉडी के ऊपर, आप उसके ऊपर हावी हो जाए. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. कुछ लोग इमोशनल होते हैं. और जो इमोशनल स्किल्स है ना, वो आपको जो विपरीत आपदाएं आती है, परिस्थितियां होती है ना, उसमें बैलेंस या बनाए रखते हैं, या आपका मदद करते हैं. इसके लिए स्ट्रेस मैनेजमेंट संबंधित कोई शॉर्ट टर्म कोर्स कर सकते हैं आप. मैं ऐसे नहीं बोल रहा कि किसी को जरूरत है, लेकिन ध्यान में रखिए स्ट्रेस मैनेजमेंट के कोर्सेज भी होते हैं, वो आप कर सकते हैं. अपन स्पीच के एंड के तरफ आ रहे हैं. अपन खुद का जो कुछ टिप्स है वो आपको देने जा रहा. रिड्यूस द मेंटल स्ट्रेस. मानसिक तणाव कमी करा. त्याला हवी नका होऊ देऊ. हे चालतच असते, हे चलते ही रहता. कम ज्यादा, कम पैसा ज्यादा पैसा, कभी कभी नहीं भी. या बच्चों की बातें होती है कि जो अपने हिसाब से नहीं होते, स्टूडेंट के अपने हिसाब से हर बात नहीं होती है. कभी परसेंटेज उतना मिलता नहीं है, कभी अच्छे मार्क्स नहीं आते, अच्छे नंबर्स नहीं आते, तो अपन परेशान हो जाते. और परेशानी आदमी को खोखला बना देती है, परेशानी आदमी को तकलीफ में लाती है. न्यूट्रलाइज द फिजिकल चैलेंजेस. आपके जो भी चैलेंजेस आते हैं ना जीवन में, उसको उसके साथ कुश्ती खेलो, उसको न्यूट्रलाइज करो, कम करने की कोशिश करो, रेक्टिफाई करने की कोशिश करो. बिल्ड अप द सोशल अटैचमेंट. मैंने आपको बोला था कि वी आर द सोशल एनिमल्स. थोडस माणसाने सोशल राहिलं पाहिजे. 4 मित्र आपले असले पाहिजे. 4 आपले बसायचे ठिकाण असले पाहिजे, ज्या ठिकाणी आपण बसू शकतो, आनंदात गोष्टी करू शकतो, आपण बात कर सकते हैं, अपने जो फीलिंग्स है, इमोशंस है, वो अपन शेयर कर सकते हैं. सो वी आर सोशल. So social attachment is very important. Nurture the spirituality. Spirituality nurture करो. Update and care the emotion. Emotion का care करो. Keep in mind. ये बात ध्यान में रखो. अच्छा आहार यानी कि आप क्या खा रहे, अच्छे विचार यानी आप क्या पढ़ रहे, क्या सोच रहे, क्या सुन रहे, अच्छी संगत आप किसके साथ में होते हो, अच्छे विचार, अच्छे व्यवहार यानी आपका बर्ताव कैसे होता है, और सदा खुश रहो. ये सभी बातों से आपके अंदर खुशी आएगी. दिस इज अ पार्ट ऑफ ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट. मैंने आपको बोला था कि नोबडी कैन गो बैक एंड स्टार्ट अ न्यू बिगिनिंग, बट एनीवन कैन स्टार्ट टुडे एंड मेक अ न्यू बिगिनिंग. कम से कम आज नई आप शुरुआत कर सकते हैं. ऐसी बातें आपको तकलीफ देती होंगी तो उसको दिमाग से फेंको, फेंक डालो यार दिमाग से, मत रखो ऐसे, डस्टबिन मत बनाओ उसका. आपको पता है कंप्यूटर में आप जितना जितना ज्यादा स्टोर करेंगे ये डस्टबिन में, या जब वो बढ़ेगा कचरा तो आपका जो कंप्यूटर है, लैपटॉप है, हैंग हो जाता है. बाद में फॉर्मेटिंग मारना, आपका ब्रेन भी आप फॉर्मेटिंग मारो. ये भूसा दिमाग में मत डालो, इसको निकाल डालो, फेंक दो. ऐसी बात दिमाग में रखने की नहीं जिससे आपको तकलीफ होती है. तो खुद का जो तनाव है वो दूर करो, खुद का तनाव दूर करो. संतुलित आहार ले लो. मैंने अभी अभी आपको बोला था, गंदगी अपने दिमाग में होती है, उसे निकाल दो, उसे फेंक दो. यू हैव टू क्लीन योर बॉडी, नॉट ओनली एक्सटर्नली. आंख धोने से नहीं चलेगा, साबुन से, कौन से साबुन से, बट इट आल्सो इंटरनली. अंदर से बॉडी को धोना, सर्विसिंग करना बहुत जरूरी है. तो दिस इज फ्रॉम माय साइड. ये मेरी तरफ से. मैं यही चाहता कि मैंने एक कोशिश करें अपार्ट फ्रॉम माय सब्जेक्ट. मैंने कोशिश करे कि एक सब्जेक्ट लूं कि जो सबके लिए कॉमन रहे, नॉट स्टिक टू सम स्टूडेंट्स. दिस इज माय अटेम्प्ट टू शेयर माय व्यूज. अरे बोलना का था. So thanks to principal of the college, Venkatesh College,
Thanks to real heroes of college, that is organizing committee. Thanks to all faculty members and various thanks to all faculty members of various subjects. Thanks to supporting technical staff of college. Again, I am thankful to the dynamic student of this institute who joined from various places. Even they facing much more or many problems related with the network. Thank you very much. Thanks, sir. Thank you. Thank you very much, respected sir, to valuable knowledge about depression and a present scenario and positive things. Sir mentioned with different examples and stories. Sir also motivate to us for meditation and yoga for the better health. I am very thankful to you, sir, for serve us a very precious and valuable knowledge. I request Dr. Mahendra Salve, sir, for the vote of thanks. Dr. Mahendra Salve, sir. Thank you, Tamre sir. Respected dignitaries, my reverend colleague and my dear student, I am here to propose my vote of thanks with respect to this function. At the outset, I place on record my sincere gratitude to Hereditary Trustee of Sri Balaji Sansthan, Devgaon Raja, and the Chairman of Sri Venkatesh College, Devgaon Raja, Raja Vijay Singh Ji Jadhav, and Dr. S.D. Chavan, Coordinator IQAC of our college, for giving us permission to organize this lecture series, and also for his comprehensive and moral support. I registered my proposed vote of thanks to Principal Dr. S.H. Kanherkar, Yashwantrao Chauhan, College Mangrulpi, District Washim, for accepting our invitation to be speaker of today's function and for their valuable guidance. I shower my heartfelt thanks and gratitude to all teaching and non-teaching staff members of our college for their timely support. Special thanks to Mr. N.P. Kakade sir for introduction and Dr. G.M. Tamde sir for a nice anchoring of this session. My thanks are also due to all technical committee members for uninterrupted technical support. Finally, I thank one and all, and with the permission of chairperson, I declare that function is over. Thank you, sir. Thank you. Now I hand over this technical session of webinar series to Mr. Ram Bhavan Saros sir, Department of Zoology. Please, Mr. Ram Bhavan sir. Thank you, my dear colleague, Dr. Gajanan Tamde sir. Very good afternoon to all of you. I am Saroj, extend you a very warm welcome on behalf of Sri Venkatesh Arts, Commerce and Science College, Raja, who has clubbed all of us for the online lecture series organized by Zoology, Microbiology and Botany on the occasion of National Science Day. I am very thankful to Honorable Raja Vijay Singh Ji Jadhav, Hereditary Trustee Sri Balaji Sansthan and President of Sri Venkatesh College, Devgaon Raja, and IQAC Coordinator Professor Dr. Sudhir Chavan sir for granting permission to organize this online lecture series. Thank you so much, sir. Delighted to welcome today's chief guest and keynote speaker, respected Dr. Shivaji Varhande sir, Assistant Professor, Department of Zoology, Rajarshi Shahu College, Patri, Aurangabad University. Welcome, sir. I also welcoming all the participants who have joined from
different colleges. Now I request to Mr. Naneshwar Singh, sir, Head Department of Zoology, to our today's chief guest speaker and dynamic personality, Dr. Shivaji Ubarhande, sir. Please, sir. A very good afternoon to all. The Department of Zoology, Sri Venkatesh Arts, Commerce and Science College, Devgaraja. Welcome you on the occasion of National Science Day. Every year, on this occasion, the Department of Zoology organizes various programs and activities for the students. Now, in this COVID-19 pandemic situation, on this occasion, today we organize the online guest lecture. We are really honored, respected Dr. Shivaji Warande sir, Head, Department of Zoology, Rajarshi Shahu College, Patri, as a guest speaker. Dr. Shivaji Warande sir, working as a coordinator for postgraduate PhD research guide in zoology. Sir has area of specialization in fisheries science. Respected sir has completed one minor research project. Sir published 17 international and 11 national research papers. Sir has received Best Teacher Award in 2014 from Mahatma Phule Shikshak Parishad. Sir has also awarded with a prestigious Young Research Award by Institute of Scholar, Bangalore. On the behalf of the Department of Zoology, I welcome you, sir, in this online lecture series. I once again welcome all the participants who join through YouTube from various colleges. Thank you very much. Hello. Thank you, Shinde sir. Now, I kindly request our speaker, Dr. Shivaji Ubarhande sir, to enlighten with us. Good afternoon. Hello. Can you hear me? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. किती वेळ आहे माझ्याकडे? How much time I have? 45 minutes. 45 minutes. Okay. ठीक है. Okay. Good afternoon. Good afternoon to all of you. Dear students, I don't know how many students are joined for this live lecture, but still we are having a positive regarding this lecture. I have 45 minutes to interact with you. In that 40 minutes I have delivered a lecture, or I will interact with you, and 5 minutes we are having a question answer session. If anybody is having any kind of questions, then he or she can ask me. Okay, so we will start our session. Actually, myself is Dr. Shivaji Ubarhande. I am a student of zoology, and my specialization is fisheries science. Today my topic is Introduction to Zoology. Today's my topic is Introduction to Zoology. Actually, zoology subject we are studying from since 2 to 3rd standard. Upon दुसरी तिसरी पासून तर till up to 12th class we are studying the zoology. Now what is zoology? Zoology is nothing but the study of animals. A simplest definition. Actually, zoology is one of the branch of biology. जे मुलं आता फर्स्ट इयरला आहेत, those who are in first year and they are having zoology subjects. So they know that zoology is one of the branch of biology. Biology is nothing but the study of life. And when you are saying study of life, you are having botany, study of plants, you are having zoology, study of animals, and study of microbes, microbiology. So zoology is one of the branch of biology which deals with the study of animals. Now this definition is till up to 12th class, 12वी पर्यंत ही definition ठीक होती, study of animals. But you are entering into a graduation. Graduation मध्ये तुम्हाला zoology एक broad concept तुम्हाला शिकावं लागेल. जसं zoology, what is mean by zoology? Obviously, it is study of animals. So
what kind of study you are studying in regarding animals? The animals आपण कोणती study हे करतो? Like in morphology we are studying morphological aspects आपण study करतो की तो animal कसा आहे. जसं we are having a huge mammal like whale and a small animal like squid. म्हणजे आपण मोठा animal पण आहे आपल्याकडे आणि small animal पण आहे. So morphological study एखाद्या ॲनिमलची मॉर्फॉलॉजिकल स्टडी आपण बघतो. स्केलेटल स्टडी आपण त्याच्या स्टडी करतो. स्केलेटल स्टडी कशी आहे. देन वी स्टडीड इट्स नर्वस सिस्टीम, देन रेस्पिरेटरी सिस्टीम, देन ऑस्मोरेग्युलेटरी सिस्टीम, देन रिप्रोडक्टिव्ह. इट मीन्स द बेसिक फिजिओलॉजिकल सिस्टीम्स वी आर स्टडी. त्याचबरोबर आपण बिहेवियरल ॲस्पेक्ट्स, हाऊ द ॲनिमल बिहेव, ॲनिमल बिहेवियर कसं आहे ते पण आपण स्टडी करतो. Classification we are also studying, since from porifera to mammals we are having a huge classification. आणि हे सर्व शिकण्यामागचं कारण हे आहे की ह्युमन टेंडन्सी आहे की सबकॉन्शियस माइंड ऑलवेज नीड टू नो द थिंग्स, नीड टू स्टडी द न्यू थिंग्स. आणि दिस इज वन ऑफ द बेसिक रिझन की आपलं जे इव्होल्युशन आहे, इव्होल्युशन हे याच्यावरच बेस आहे की स्टडी द न्यू थिंग्स. त्या गोष्टी आपल्याला माहित नाही त्या गोष्टी आपण माहित करतो. And this is all about the classification. This is all about the evolution. Ecological distribution we are also studying. Ecological distribution, like we are having a tremendous ecology like desert ecology, riverine ecology, reservoir ecology, marine ecology, rainforest ecology. So lots of ecologies are there in biome. So we are also studying under this zoology. Embryology we are also studying. Physiology we are also. It means that the study of animals means not only the animal but the aspects which are regarding to that animal that we have to study. मग याच्यामध्ये आपल्याला सराउंडिंग जो बायोटा आहे आपला त्या बाबतीमध्ये आपण बघतो. Lots of research will be done into zoology regarding any field. We will discuss later on that. Now we are studying with the branches. Now what kind of branches? आता zoology ज्यांनी घेतलेला आहे, zoology subject ज्यांनी घेतलेला आहे, त्यांना zoology मध्ये कोणकोणत्या branches येतात? We are studying one by one. Like first of all we are studying the structural zoology. Structural म्हणजे अशा काही aspects आहेत की जे structure. जसं आता suppose I ask you, close your eyes and imagine the giraffe. Immediately you will imagine the giraffe. That means that you know the structure of giraffe. So this is what the structural zoology. Actually we are having a very less time, so we are in hurry to complete or cover all the aspects. So structural zoology, it means the morphology. In that we are studying the morphology. Morphology means the outer structure. Every animal is having its own outer structure. So study about the outer structure. आपण एखाद्या लहान बाळाला आपण सांगतो की हा कुत्रा आहे, ही मांजर आहे. Then he see that animal and after that his subconscious mind and his mind will recognize that this is dog, this is cat, and till up to his life तो ते लक्षात ठेवतो. So this is all about means the structural biology. So we can identify the animals by the structure. Anatomy, obviously anatomy is the structure, study of structure. Histology, study of tissues. There are so many kinds of tissues are there in body. So study of that tissue. Cytology, a very famous branch of zoology. Cytology. Cyto means cell. Study of cell. And now study of cell. What is mean by study of cell? Suppose we are studying the cell in cellular level or in low level organism system. We are safe. Like we are also having cell. A dog is also having cell. A cat is also having cell. Cat मध्ये सुद्धा सेल आहे, त्यालाही खूप ऑर्गॅनिल्स आहेत जे आपल्याला आहे. मीन्स लो लेवल ऑर्गन सिस्टीमला आपण सर्वजण सारखे आहोत, बट इन हायर लेवल ऑर्गॅनिक सिस्टीम वी आर डिफरंट. Like we are human beings, some are reptilians, some are amphibians, some are Pisces, some are cyclostome, poriferans. Like non-cordates, we are also having porifera, protozoa, Inophora, Coelenterata, Arthropoda, Mollusca, Annelida, Echinodermata, Hemichordata. So there are 10 non-chordate phylums are there.
सो स्टडी अबाउट द सेल. आता याच्यामध्ये स्टडी करत असताना आपल्याला बघावं लागेल की सिंगल सेल टू मल्टी सेल हाऊ वी स्टडी. वाय प्रोकॅरियोटिक सेल शुड बी चेंज इन टू युकॅरियोटिक. प्रोकॅरियोटिक्सचं रूपांतर इव्होल्युशन होऊन युकॅरियोटिक्स मध्ये का झालं. So this will also study into that cytology. Now the next branch is developmental zoology. Developmental means somatic cell development जी होती आपल्यामध्ये. म्हणजे embryology, study of embryo. Chick embryo you are having in that your syllabus that 48 hours, 48 hours, 72 hours, like chick embryo. Study of embryo. Then ontogeny. Ontogeny means individual the study करें, each individual. Genetics, you know the Mendel, father of genetics. In that you have studied the heredity and variation. Hereditarily you are having 23 chromosomes from your mother, 23 chromosomes from your father. So heredity and variation. आपल्या जो human beings है, unity in diversity. We believe into unity in diversity. Then the next branch is functional zoology. Functional zoology. In that taxonomy. What is meant by taxonomy? Taxonomy means classification. Classification means sorting, naming, and grouping of the things. Like you are having your name like Shekhar, Ramesh, Sita, Sheetal. This is your school name. You are also having a one pet name like Pintu, Chintu, Chakuli. These names is your local name, but you are having a scientific name. The scientific name is Homo sapiens sapiens. This is the unique name which you have. म्हणजे टॅक्सोनॉमी आपण स्टडी करतो, क्लासिफिकेशन आपण स्टडी करतो. सिमिलर कॅरेक्टर असलेले ऑर्गॅनिझम्स आपण एकामध्ये टाकतो. जसं आपण पायसिस जर म्हणलं, पायसिस ऑल फिशेस, ॲक्वेटिक ॲनिमल्स कम इन टू पायसिस. गिल्सने रिस्पिरेशन करणारे पायसिस मध्ये येतात. फिन्सने लोकोमोशन करणारे पायसिस मध्ये येतात. ॲम्फिबिया मीन्स ड्युरल नेचर. ही कॅन लिव्ह इन टू वॉटर ऑल्सो अँड लँड ऑल्सो. जसं फ्रॉग आहे, टर्टल आहे, सॉरी टर्टल नाही, फ्रॉग आहे, टोड आहे. So this is all about the taxonomy. The entomology. Entomology means study of insects. This is a huge phylum we have after plenty. Plants नंतर जर डायव्हर्सिटी सगळ्यात जास्त पुण्यामध्ये असेल तर ते आर्थ्रोपोड्स मध्ये नियर अबाउट 90,000 we have the classified insects आपण आयडेंटिफाईड केलेले आहे. Then protozoology. Proto means single cell organismचा अभ्यास करतो आपण त्याच्यामध्ये. Then malacology, मोलस्कनचा अभ्यास करतो आपण. Mollusk, snail is one of the example. Ichthyology means study of fish. In that we have if you are studying a animal, जर एखादा ॲनिमल तुम्ही स्टडी करत असाल तर त्याचे बेसिक जेवढे काही त्याचे फंक्शन्स आहेत, बेसिक जेवढ्या काही प्रोसेसेस आहेत त्या आपण त्याच्यामध्ये स्टडी करतो. And these one branch is equal to one subject. In higher studies, when you are going for MSc, तुम्ही जेव्हा MSc ला जाल तेव्हा तुमचे स्पेशलायझेशन होतात. एंटमॉलॉजी असेल, प्रोटोझोलॉजी असेल, पॅरासायटॉलॉजी असेल, हेल्मेंथॉलॉजी असेल, फिशरीज असेल. So you are having a specialization in zoology. Mammalogy, study of mammals. Helminthology, helminths, parasites, endoparasites बद्दल आपण त्याच्यामध्ये स्टडी करतो. एपिकल्चर, स्टडी ऑफ हनीबीज और हनीबी कीपिंग. देन एंथ्रोपोलॉजी मीन्स स्टडी ऑफ ओरिजिन. एंथ्रोपोलॉजी आपला ओरिजिन कुठे त्यात. कार्सिनोलॉजी, क्रस्टेशियन्स बद्दल आपण अभ्यास करतो. देन वी आर ऑल्सो स्टडिंग अबाउट द हॅबिटॅट ऑफ द पर्टिक्युलर एनिमल्स. सपोज आपण एक एक्झाम्पल घेऊ की सपोज a particular type of plant is available in Botha forest, okay, which is near to Buldana, okay. And sometimes काय झालं की तो जो प्लांट होता तो आता तिथे नाहीये. मग तो प्लांट नाहीये तर कशा आणि ते कसं आपण ओळखणार मग. बिकॉज plants are producers and some insects, some birds, some animals, they are depending on that plant. जर तो प्लांट काही कारणास्तव, जर ते झाड काही कारणास्तव तिथून लुप्त झाला तर ते कसं ओळखणार आपण की त्याच्यावर बेस असलेले जे अॅनिमल्स आहेत की जे तेच खातात.
ते जर समजा तिथे मिळत नसतील आपल्याला तर मग ते see animals if you are not they are not getting the proper environment, they will migrate from one place to another place. So this is all about means this is also studied in zoology की एखादी जर पॉप्युलेशन तिथून जर समजा इमिग्रेशन झाली असेल किंवा इमिग्रेट झाली असेल तर why that population get immigrate, this had to be studied in zoology also. Then distributional zoology. Distribution means like penguins. Penguins are only found in Antarctica. They will not found in our region. तसंच काही animals असे आहेत की जे animals त्या particular endemic region लाच असतात. So we have to study the distribution of that animal. Why they have found in only that region only. So that is come into zoo geography. This is the one of the field which is new field. Ecology, relation between organism and environment. Obviously, I will give one example. समजा तुमच्या वडिलांनी तुम्हाला एक पेन घेऊन दिला असेल आणि तो हरवला तर आपण त्याच्यासाठी आपण थोडंसं मन विचलित होतो आपलं, बरोबर आहे. Actually, pain is a abiotic factor, but we are having an interaction. We are having such kind of an interaction with that particular non-living thing. So this kind of interactions, relation between organism and environment, that should be studied into ecology. Now the next one is histological zoology, paleontology. Paleontology means study of fossils. सिंधू संस्कृती आपण बघितलेली, सिंधू संस्कृतीचा जो शोध लागला तो फॉसिल्स मुळे लागला. डायनासोर्स आपल्याला माहित झाले ते फॉसिल्स मुळे झाले. आजही बऱ्याचशा लेण्यांमध्ये आपल्याला बरेचसे फॉसिल्स दिसतात, बरेचसे अल्गीज आपल्याला तिथे अवेलेबल आहेत, बरेचसे सिंगल सेल ॲनिमल्स म्हणजे प्रोटोझोन्स किंवा काही मायक्रोब्स आपल्याला तिथे दिसतात. सो वी हॅव टू स्टडी दॅट paleontology. In that paleontozoology, paleontobotany, there are some subjects. Phylogeny is also there. Races, we have to study about the races. एखादी जमात जर लुप्त होत असेल तर ती कशामुळे लुप्त होते, जसं डायनासॉर्स, they extinct right now, they are extinct, but why? We will study into phylogeny. Evolution, it is a big subject. Evolution is a big subject. Evolution means origin of life. You know that the Darwin, Charles Darwin, he studied his whole life for only one reason, that is called as origin of life. That economic zoology, this I have discussed later on. Then medical zoology. Medical zoology like parasitology. Parasites, in that you have to study about the parasite. Pathologies. Pathology means disease, symptoms, and their treatment. Right now we are suffering from a corona disease. Now it is become a pandemic. So because of only that, we are taking the lecture online. Otherwise, I will came into the college and I will deliver the lecture in your college. Now, you are also studied zoology for economy, like economic zoology, economic values of animals. Since from the ancient time, means since from 10,000 BC, before Christ, 10,000 BC, we are get civilized. At that time, from that, we are also having an animal culture for our welfare, means for economic value. And I have taken some examples which are very common to you, very common. And we are studying that one. The first one is sericulture. Silk. Silkची शेती जी केली जाते, cocoon. Silkची शेती जी केली जाते, sericulture. Sericulture is one of the good economic value. It is having a very good economic value. Now the silk, Bombax mori, that silk we are using for culture, it takes near about 1.5 months for this process, and it is having a very good value in the market. 425 rupees to 625 means 400 to 600 rupees per kg is the market price of per kg. 425 at Bangalore market. So it is having a very good means it is a economic zoology. Then the second one is apiculture. Apiculture means honeybee, culture of honeybees. Actually, sericulture, apiculture, these are our from the ancient time, human beings interact with these cultures. Apiculture, rearing of honeybees.
honeybees is having a very good economic value, also the medicinal value also. Honeybees medicinal value सुद्धा आहे. Honeybees is used as a nutritional food. Pharma मध्ये सुद्धा आपण त्याला यूज करू शकतो. We are also using some polishes. जे wax आपल्याला मिळतात. त्या wax मधून आपण polishes तयार करतो that you are using to polish your shoes, belts and some other things. Pollination, it will also increase the pollination. There are two species which are very common in India, Apis doresta and Apis indica. These are the two species they are using as a apiculture. त्यानंतर जर आपण जर एक व्हेरी कॉमन जर बघितलं तर फिशरीज, मत्स्यपालन. फिशरीज मध्ये नाव द व्हेरी कॉमन कल्चर वी विल ऑब्झर्व that bioflak is one of the Israel technique we are using for the fisheries. Karan agriculture is not enough to fulfill the food requirement of our India, because India is the second largest population in the world. So fisheries is one of the substitute food होऊ शकतात. Thus apiculture food नाही होऊ शकत. Apiculture is having totally economic value. Silk is not used for food purpose. Silk is for the another, but it's a byproduct like this. But fisheries is used as a substitute food. कारण fishes highest richest of protein असते, less amount of fat आहे त्याच्यामध्ये, and mostly major carbs will be used for culture of fishes. Since from ancient time दोन पद्धतीने फिशरीज केलं जातं. एक कॅप्चर आहे, एक कल्चर आहे. कॅप्चर मध्ये फक्त जाणे आहे, जाळं टाकणे आहे आणि मासे कलेक्ट करणे. आणि कल्चर मध्ये यू हॅव टू कल्चर द फिशेस. इन फ्रेश वॉटर वी आर हॅव्हिंग 3 स्पीशीज, कटला, रोहू and mrigal. These are majorly used for culturing the fishes. Then the very common economic zoology or economic value, that is poultry. Poultry, we are very much familiar with this word poultry. ज्याच्यामध्ये hen पण येतात, ducks पण येतात, काही turkeys पण येतात, काही geese पण येतात. म्हणजे कल्चर ऑफ बर्ड्स. आणि त्याची इकॉनॉमिक व्हॅल्यू काय आहे? वी आर हॅव्हिंग eggs. Eggs is the richest amount of protein is having. Chicken we are also getting from poultry. Then goat farming. Now in villages it is very common goat farming. आपल्या खेड्यामध्ये सध्या कुक्कुट पालन असेल, शेळी पालन असेल, it's very common. And goat we are using we are using the milk, meat, that we are also getting some fiber, we are getting wool. So it means that it is a good profitable business. Then another one is a dairy science. This is one applied branch of zoology, dairy science. Means sadhya India is the second largest producer of milk. So it is also giving employment to the youth. Youth la employment sudha मिळू शकतं, and it will fulfill the need of our food. We are also now this is all about the economic zoology. Means economic value of animals. We culture the animals according to our welfare. Thereafter the last session of our topic is job. Now you are entering into a graduation and you are choose the 3 subjects like chemistry, botany and zoology. And if you are getting into for MSc in zoology or in PhD in zoology, or regarding only zoology, I have discussed with some jobs. Like suppose you do BSc, MSc and PhD or net set. If you clear that one, the entrance test, you are getting into lectureship. Then you are also having some allied jobs. Like in zoos, you need जे काही नॅशनल पार्क्स असतात, जे सेंच्युरीज असतात, त्याच्यामध्ये झॉलॉजिस्टची गरज असते. So you are having a job into as a zoologist. You know Discovery and Animal Planet channels. They need the zoologist for various purposes. You are also working as an animal behaviorist. Conservation, you are also working into conservation. Wildlife biologist, you can also get a job. Zoo creator, झू मध्ये जे एनिमल्स आणलेले असतात त्यांची आपण देखरेखसाठी सुद्धा जॉब असतो. These jobs are available on BSc and MSc. Then wildlife educator,
then zoologists, faculty member, forensic experts. You can also having lab technicians. You can also having a job, animal rehabilitator. You can also having that kind of job. That means there is no problem regarding if you are studying higher study, if you are getting higher studies in zoology, so you are having a good job and a good future. One of BSc and MSc, these are the basic qualifications for your job. So the students which are engaging in BSc right now, BSc first year, they can also think about the good job nature in zoology. You can also having after graduation, you can also doing MPSC competitive exams, and you are having a very good future. So with these few discussion, I will conclude myself. I'm very thankful to the organizers for giving me a chance. I'm thankful to Mr. Gyaneshwar Simbre and his team. I'm thankful to Ram Saroj sir and the Aqua coordinator. I'm also thankful to the principal, Dr. Jadhav sir, and the society for giving me a time to interact with your students. I am also thankful to the technical staff and those who are directly or indirectly attached with this session. With this word, I'm thankful to all. Thank you. If anybody is having questions, they can ask me. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, sir. Our knowledge with us, sir. सरांनी आपल्याला बेसिक झुलॉजीच्या वेगवेगळ्या ज्या ब्रांचेस आहेत जसे की टॅक्सॉनॉमी, पॅरासिटॉलॉजी, प्रोटोझोलॉजी, पॅलेंटॉलॉजी, इव्होल्युशन, इकॉनॉमिक्सॉलॉजी आणि वेगवेगळ्या ज्या फिशरी किंवा ॲपिकल्चर जे जे ॲप्लिकेशन आहे त्याच्याबद्दल खूप चांगलं नॉलेज दिलेलं आहे. आणि परत या सगळ्या क्षेत्रांमध्ये वेगवेगळ्या काय अपॉर्च्युनिटीज आहेत आपल्या जे BSc किंवा MSc किंवा नेट सेटमध्ये किंवा झाल्यानंतर तुम्ही याच्यामध्ये वेगवेगळ्या काय अपॉर्च्युनिटी त्याच्याबद्दल सरांनी विस्तृत माहिती दिली, त्याच्याबद्दल मी सरांचे खूप खूप आभार व्यक्त करतो. सो नाव इट्स टाइम टू वोट ऑफ थँक्स. It's my privilege to propose a vote of thanks to those who made this event successful. It's my prime duty to thank our hereditary trustee of Balaji Sansthan and President Honorable Raje Vijay Singh Ji Jadhav sir, Deolga Raja, for their inspiration and continuous support. And I am also thankful to our today's President and Head Department of English, Dr. Chauhan sir. Thank you so much, sir, for their guidance and support. And it's my privilege and prime duty to thank our today's chief guest speaker, Dr. Shivaji Ubarhande sir, for giving their valuable time and sharing their knowledge with upcoming youth. I am in depth to thank coordinator of this session, Mr. Gyaneshwar Simbre sir, and also thanks to all participants who have joined from different colleges. Last but not least, thanks to our technical team to make this program and session successful. Thank you so much, sir. The permission of our Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. With the permission, Thank you, sir. बोला. We declare that this program is over. Thank you, sir. Thank you, सर होस्ट तुम्ही झालेला झूमचा एकदा मला होस्ट करून नंतर तुम्ही झाले काय म्हटले? तुम्ही होस्ट झालेले आहे झूम मीटिंगचे, एकदा मला होस्ट करायचं. अच्छा, होस्ट करायचं का आपल्याला? मला बर, तुम्ही झूमचे होस्ट झाले. जर लेफ्ट झाले ना तर डायरेक्ट तुम्ही होस्ट होता. लेफ्ट हॅलो, हा सर लेफ्ट झालं तरी मी होस्ट होऊन जाईल डायरेक्ट. तुम्ही लेफ्ट जरी झाले
बुलढाणा खंभावा तो सुरू झाली बस मार्गे. तुम्ही लेफ्ट झाले तरी चालेल सर, मी होस्ट होऊन जातो ऑटोमॅटिक. हॅलो 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 त्यांना होस्ट करायचं. हॅलो हॅलो सर. त्यांनी मला केलं. हॅलो सर, तुम्ही लेफ्ट झाले तरी मी होस्ट होऊन जाईल ऑटोमॅटिक. हॅलो 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 हा सर, तुम्ही लेफ्ट झाले तरी मी ऑटोमॅटिक होस्ट होऊन जाईल. तुम्ही लेफ्ट झाले तरी चालेल. हॅलो हा सर, तुम्ही लेफ्ट झाले तरी मी ऑटोमॅटिक होस्ट होऊन जाईल. अच्छा, मी लेफ्ट होऊन जाऊ. हो 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 बरं, ठीक आहे. ओके ओके. थँक्यू सर.